unmute. By host. By host. Hello, everyone. Are you audible, ma'am? Yes, ma'am, you are. Good evening, everyone. Ma'am, right now we have only 12 participants, and two are like you and me, including you and me. We have only 12 participants, so we'll start the meeting in a minute or two. Okay, ma'am. My screen is visible? Yes, ma'am, your screen is visible. Can you put it on the slide share mode? Means, ma'am, there's an icon. Yes. So in that case, it will be more visible. So good afternoon, everyone, and welcome to today's session. Today we have Dr. Poonam with us, and she will be taking session on activities to develop reading skills. And we'll be discussing various activities that we as a teacher can take in our class for developing reading skill among students. So welcome, Dr. Poonam, and over to you. Thank you. For joining us. Thank you, Chanchal ma'am, and thank you everyone. Ma'am, may I start? Able to all of you, please reply in chat box. Yes, ma'am, you are clearly audible to us. Okay, sir. Okay. Yes, so, ma'am, you are audible. Yes, welcome everyone. Now, today we are going to learn some reading skills practice
So I hope you are all ready after lunch. Now this is our presentation is going to start about reading practice skills. There is some words. Maybe you are very much clear to read all words collage given here. Let's have activity to start our session. Before we are going to start activity, we are going to share a beautiful video with you all. Ma'am, kindly unmute yourself and then speak. Ma'am, you are not audible. Kindly unmute yourself. Oh, everyone. Actually, there is something wrong with the video, so I will share in your Telegram group. I'm trying to share with you all. So let's start our activity. Next. So now there is a game for you all. Just read these instructions. Go and collect 2 pens, 1 pencil and a knife. There are some मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी ऐसे क्लिक कराने से। बता दे मुझे, मैं खुद कर लेती हूँ। इससे हो जाएगी ना, इससे कर लेती हूँ। इससे होगी, इससे। Am I audible? ये तो आज की प्रेजेंटेशन कचरा होती जा रही है, मैं देख रही हूँ। इसको खोल दे, नेट नहीं आ रहा है यहाँ पे। Yes, ma'am, I am muted by your side. Or yes. So now there is
activity. Go and collect 2 pens, 1 pencil and a knife. Just check out your surroundings and maybe it in your purse and your yes. There are some things given by me to enjoy activity. Go and collect 2 pens, 1 pencil and a knife. And second, bring a toothpaste, a brush and an oil if you have. Today there is some problem in my network. So please be with it. Now 3 coins of 1 rupees and a 100 rupees note. Read the instruction properly, and if you have already collected, so please share, unmute yourself. 2 pens, 1 pencils, a knife, toothpaste, brush and oil, 3 coins of 1 rupees and a 100 rupees note. If someone have all these things or some things from this given list, please unmute yourself and share. Any one of you, please share with me. Unmute yourself and share. You can even show with opening your videos. You may share with me in through chat box also if you have all these things. I am not audible. There is something, ma'am. Am I not audible? Yes, yes. Now, please, you may share. Yes, there is a list given by me to read out all the instructions. If you have all understood about that thing, I need to start activity. If you have, please share. Unmute yourself and share that you have pens, pencil, knife, toothpaste, brush, oil, 3 coins, 1 rupees and 100 rupees note. Actually, I'm in school, so I don't have a knife here. I just have Yes. and some notes. Okay, sir. Thank you so much for your sharing, sir. Your name, please. Praveen, All sir. right, Okay, ma'am. sir. Praveen, sir. Yes. Anyone wants to share? If anyone have all the things, thank you, sir. Any one more sharing? If want. Yes, ma'am. I am Suvedar Rajkar. Yes, sir. Please. I have two pens, 1 pencil, and Sir, 100. if possible, sir, please switch on your camera and please show, if possible. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. I have 2 pens here, Yes. 1 pencil, Yes. and 1 knife. Sir, do you have knife? Yes, Okay. and 100 rupees note. Yes. Thank you, These sir. are the Thank you things so I much. have right Yes, now. sir. Yes, sir. Yes. These are the things I have right now. Present. Okay. Thank you, sir. Any one more sharing? If someone wants to share. Okay. We move. So these things I have shared for activities. Some basic things we all have. Sometimes 2 pens, pencil, and there is some words written on pens, pencils, and a knife. I just want to share this pen with you. I have a pen, and this is from
is brand name is Flair. Flair able to read, and as you all know, all the things given to the list related with some reading knowledge, and there are also in toothpaste, brush, and oil, so many kind of things that you have purchased through reading the specialty. Even on coin, you are able to read out the about coin, number of coin, and there are some more instructions on it. And there is 100 rupees note. You are able to even read the Reserve Bank of India name, governor signs, and so many things. So we can use these local and available easily things to reading practice in our classroom. We can use geometry box and so many things available with our students to develop reading skills. So now some riddles with you. I want to play a game again with you for development our reading. There are some questions are there. You may use your chat box to share your answer, and you can unmute yourself to participate in this activity. How many months of the year have 28 days? There is riddles. Response I need. How many months of the year have 28 days? Yes. From Sunena ma'am, 12 months. Okay, you missed. You all months have 28 days. Thank you. If someone wants to share, yeah, yes, yes. You are not audible, sir. सर द क्वेश्चन इज दीज आर सर रिडल्स पहेली है तो सर इसमें ये पूछा गया है हाउ मेनी मंथ्स ऑफ दैट ईयर हैव 28 डेज कितने महीनों में 28 दिन होते हैं तो वो सर सभी में 28 दिन तो होते ही है ना तो मूव नेक्स्ट व्हाट हैज अ नेक बट नो हेड व्हाट हैज अ नेक बट नो हेड What's your name? T-shirt by Sunena ma'am. Very conscious. Sunena ma'am, very good. Very nice. T-shirt. Yes. Shirt, T-shirt, bottle also. Thank you. Now, what comes down but never goes up? What comes down but never goes up? Subedar sir also said, this is rain. Okay, very nice. Pawan sir, very prompt. Needs an answer but doesn't ask a question. A phone call, ma'am. Okay, there is one. Yes. Phone call. What needs an answer but doesn't ask a question. Yes. What goes up, sir? How many response? There is no response in chat box. Okay. What goes? What? Number 5. Yes, someone age. There is age. Answered by someone. Which letter of the alphabets has the most vowels? This is also a riddle. Yes, C. C. Substitute of. Yes, with ma'am C. Praveen Kumar sir C. So very interactive participants are there. What is in light as a feather, but even the strongest human being in the world can't hold it for long? Number 7 riddle. Yes, breathe. Yes. Khalida Parveen ma'am says voice not audible. Am I not audible? I think I'm audible, ma'am. Please check your side. Air from Subedar sir. Yes, I am audible, ma'am. Please check yourself who is responding that I am not audible.
And Sunana ma'am also share audible and breathe air. What has hands but can't clap? Clock. Very nice. Yes. From Sudhanshu sir, yes, it is clock. Ma'am said cloak. Surinder Badal sir, cloak. Yes, I think very beautifully answered by you all. Now, last, what word is spelled wrong in all the dictionaries? What word is spelled wrong in all the dictionaries? Yes, this is wrong. Wrong is always wrong. So now here are your answers for the riddle. Next. Yes. There are only nine clock is repeated by technically mistakes, and there is only 9 questions shared by me to with you all. So participants, please share about your experience. What are you thinking about this riddle activities during reading skill? Unmute yourself and share, please. What is the objective of these riddle activities during our reading skills development activities? Please, someone, if you want to share. What is the objective of this activity? This kind of activities, why do we have to use this kind of activity during reading skills? To get friends attentive, ma'am. Yes, very. Thank you so much, Praveen sir. Interest from Sonia Verma. Some more, most interesting. Thank you. And some responses from audience. You can unmute and share your thinking skill. Yes, sometimes thinking skill development, sometimes brainstorming, attractive also. Yes. Correlate with words, its meaning. Yes, Subedar sir shared attentive Sonia from Sonia ma'am. If someone want to share something different from everyone, unmute yourself and please share with me. Listening skill practice also, yes. Already shared by Sunena ma'am. Thinking skill developed by the participants or the learners. Next. I have prepared some video, but there is some glitches on my side, so I will share that video link with you all in the Telegram group. So I just want to continue with my PPT. Actually, there are some words, lyrics from given by Michael Jackson, sir. I think all words are visible. If someone want to read for me, I will be more happy with you all. Please, someone. These are the lyrics given by Michael Jackson in a song. Yes. May I, ma'am? Yes. Yes, ma'am. Yes, please. First one is there are people dying. Second, make it a better place. Third, heal the world. Fourth, for you and me and the entire human race. Fifth, make a better place Yes. for. Sixth, if you care enough for the living. And seven, you and for. Yes. Now next. This video actually added by me during presentation, but video not able to just without it takes some times and hang my PPT is almost to hang out with it. So I will share in your group so we can move. Now reading is to the mind what exercise. There is it is about these words that there is a beautiful song sung by Michael Jackson.
about our life also. Reading is to the mind what exercise is to be the body. कि जब हम कुछ पढ़ते हैं तो माइंड से तो हम उसको देख ही रहे हैं, साथ साथ हमारे बॉडी में भी उसका पॉजिटिविटी जाती है. तो ये रिचर्ड स्टेल के वर्ड्स हैं जो मैं शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ. तो मूव टू नेक्स्ट पीपीटी. Some more possible resources we can use to develop reading skill. Actually, there are some basic things shared by me for development of reading skills. There are some wrappers used by me, like an or readable material. If someone wants to read, please. There are so many spellings and content is there. If someone wants to read, please. Am I audible to all of you? Yes, Yes, ma'am. Yes, Ma'am, if someone wants to read there, actually this is reading skill practice, so that's why I'm invited participants to read some information for all. should I, ma'am? Suman, Yes, ma'am, yes, ma'am. Dairy Milk, Snickers, Yes, Uncle Chips, yes, Bole Mere Lips, I love Uncle Chips. Brand history yes, launched in 1992. Uncle Chips was a pioneer in branded potato chip leader with 71% market share until 1998. Saw competition bring its market share down to 35% by 2000. It was brought down yes, to 0.95% by 2020. Originally owned by Uncle Chips Company Limited. Maggie 2 minutes noodle. Wow, super medicine craft idea. Liz, So quick. these, yes, thank you, ma'am. So these kind of reading content we all have in our purse also. There are so many things have reading content. So we can use to develop reading skills. There is nothing more need to read develop reading skills. We can use this kind of wrappers, some advertisement kind of things to develop reading skills. Next. So there is my next PPT about some more reading content. What you are able to, if someone want to share, please. There is so many information shared by me. Yes, yes. There are all reading content from my own home used by me. All there is, yes. Then there are Aadhaar card. Yes. Then there are Yes. Challan is there. Parking Boarding challan. pass. A check is Yes. there. And Yes. and this one is not clear, ma'am. The Excel sheet, spreadsheet, from station. It is train chart. Train chart. Yes. Railway confirmation, बर्थ confirmation एक्सेल शीट इज देयर कि जब हम देखते हैं कि कहाँ पे नाम आया है तो हम देखते हैं अपनी रेलवे का अपना जब बुकिंग कराते हैं उसका है ये. देन यूको बैंक चेक इज देयर एंड सम आई थिंक देयर इज सम मोर इंफॉर्मेशन. आम आदमी अधिकार अपना आधार नंबर है. पार्किंग, जहाँ पार्किंग के साथ हमें जो डॉक्यूमेंट, तो ये वो डॉक्यूमेंट है जो हमारे पॉकेट में हमेशा ही रहते हैं. आपने देखा होगा कि ये सारी जो चीजें हैं हमारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ हमारे साथ हमेशा रहती हैं. तो वी कैन यूज फॉर रीडिंग स्किल टू डेवलप. नेक्स्ट. टिकट्स, बिल्स, कार्ड्स, checks, recipes. Now, some more things. There are some posters. If someone wants to read, please. Actually, this is reading section, so we have to use more participants to read these all information. These are posters, greeting cards.
Yes. First one is causes of global warming. Yes. Then it is rock for a cause. Yes. And then WHO, be kind to support loved ones during coronavirus. Yes. Check in regularly, especially with those affected. Encourage them to keep doing what they enjoy. Share WHO information to manage anxieties. Provide calm and correct advice for your children. Learn more to be ready for COVID-19. United Nations Yes. WHO. Then it is the body achieves what the mind believes. Unity Yes. Day, October 21st, 2020. Wear and share orange to prevent bullying and promote kindness, acceptance, inclusion. Then So, yes, all information is very much readable and clear to all. Actually, these all things shared to use easy content in our classroom. We can have so many things, and there is so many things also. Signboard, notice is there. Even yes, there is a dhaba stall logo is there. Liquid tea available. And notice, thank you for noticing this new notice. Your noticing is had been noticed. And some instructions, welcome tourists, we speak English. And if you are catch, there is something wrong. Welcome spellings, tourist spelling, all spellings you can easily find out that all. Only V is correct and all is wrong here. Actually, the reading material we are all teachers easily find out the mistakes in the signboards क्योंकि जो signboard बनाते हैं उनका स्पेलिंग रीडिंग का इतना अच्छे से क्लियर नहीं होता कंटेंट तो मोस्टली साइनबोर्ड्स में पैम्फलेट्स में गलतियां आती हैं और हम उसे इजीली देख पाते हैं and there is where is my metro the information given all in all metro stations and in all our metro compound also so we are almost used to of this information there are some metro stations I want to hear from you name any two stations falling on the yellow line anyone unmute yourself and share please from PPT. Yes. One is Yes. Kalyan Park and second one is Dorba. Okay. Thank you, ma'am. Thank you so much. Now name the color of the line 6. Line 6 color क्या देख पा रहे हैं आप PPT में? Black. This is black. This is black, sir. Yes. Now next is name the station having plus sign. Ma'am, Ames. Okay. One have plus sign. What is the name of the mustard line? Airport Express Line. Airport Express line. Okay. Now name all the stations falling on the pink line. Please, someone, please participate who are not speaking till now. Ma'am, Sir Vishweshwar Motiba, Bikaji Place, Sarojini Nagar, South Extension, Lajpat Nagar. These are the stations on pink line. Okay, thank you everyone. If someone want to add something, कि आपको ये एक्टिविटी कैसी लगी अपनी क्लासरूम के लिए हम इसको किस तरह से कर सकते हैं? There is more video attached by me, but I will share in your group. So there is one more activity with you. Actually, there are some reading information given in all because it is reading practice. So we have to all participate for practice session.
Plan a small meal for me under rupees 220, including salad, papad, and veg soup. There is menu card of some recipes. You have to choose 220 rupees menu. 220 रुपीज में हम क्या क्या सैलेड पेपर उसमें और क्या इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उसमें होना चाहिए सैलेड पापड़ और वेज सूप. So, now read menu card and find your cost and you can order 220 rupees food. You can share in chat box. What we can order into 220 rupees? There is question. Salad, papad, and veg soup. Participants, you are requested to participate because this is our reading practice and we are all used to with this kind of things when we order something to our family and some relatives also, and when we move to a tea party or dinner, we can all go through this kind of menu cards. Please share your I think there is no one interested to play this game. It is not game actually. You have to plan a menu with 220 rupees with this reading practice also. कि जो information हमें यहाँ दी हुई है उसको आप ठीक से पढ़ें और देखें कि मेरा 220 रुपीज में क्या क्या आ रहा है. जो तीन चीजें हमने बोली है सैलेड पेपर एंड वेज सूप में से. Yes. Yes, ma'am. I wanted to say. Yes, sir. Yes, sir. Well, Ma'am, green salads yes. of 20 rupees and roasted Yes. papad 30 rupees Yes. and soup of 120 rupees. Total amount 220. Thank you, sir. Now we can add some more. Yes. Yes, ma'am. One Russian salad, 120 rupees, and veg clear soup, 100 rupees. Actually, I love Russian salad, that's why I choose this. Yes. Thank you, ma'am. Thank you for sharing. Someone more, if someone want to add one more sharing, if interested, or if you want to share one more, please. Yes, ma'am. Green salad, 70 Yes. rupees. Yes. Ma'am, roasted masala papad, 40 rupees. Yes, sir. Clear soup, 100 rupees. Sorry, ma'am. Tomato soup, 110 rupees. Total Okay, amount thank you, sir. There is, yes, thank you, sir. Sunena ma'am said that I have saved 10 rupees also after ordering these kind of things. So thank you, everyone. Thank you for sharing. Let's move. Now, there is yes, there is very famous quotations by William Shakespeare. All the word is staged. If someone want to elaborate these words, what is the message from this quotation by William Shakespeare? All the word stage. Very familiar quotation by William Shakespeare. Okay. No one Yes, want ma'am. to? Yes, sir, please. This is the famous line by William Shakespeare. Here he wanted to say that Yes. this world is a stage like where everyone is playing their role as a Yes. role players or participants.
and there are 7 scenes in our life. Yes. So this is the representation of this world with the help of stage drama. So this Yes. whole world is a platform of drama. Yes. Thank you, sir. So there are very few words, but a very deep message given by Shakespeare, sir. So let's move. Thank you, sir. Very beautifully you have elaborated this quotation. Yes. Cookies. Yes. Yes. Now there is these questions related with the video. There are some information in video and related questions there. Actually, video I will share. नेम ए कुकीज ब्रांड शोन इन द मूवी, तो ये चैट बॉक्स में हम शेयर कर लेंगे बाद में, क्योंकि अभी आपने वीडियो नहीं देखी है तो क्वेश्चन मैं आपसे नहीं पूछ सकती हूँ. तो these MCQ prepared for to describe that video. Next. These two questions related with this video only. Next. Yes, there is only one more video shared about the silent love of a father and a daughter. I will share. Meanwhile I'm trying to share this video with you all, if possible. But this is not supporting my network. That's why I'm thinking to share in Telegram group only. Next one, please. So this is all for reading practice. Now, participants, I want to share something more information that we all have in our home. There is some kind of medicine, liquid medicines instruction we all have. We can use this in our reading practice PPTs. All information is there given by the company. This is the multivitamin syrup. If it is actually, I just want to share some live things with you all, because we all have all things in our home also. And there is some recipe given on this. This is about the dal makhani, and we have in English and Hindi also. There is a recipe in English, and yes, and all information given in English also. So we can use all the kind of things for reading practice. So this is the wrapper of namkeen we all have, and this is about eye drop and hand sanitizer we all have nowadays in our purse or our bag also. And some sari wrappers, some more wrappers. We can use all that things during our session, during our class, during our classroom reading practice. Before we are going to read any kind of content in our classroom, we can use some pre-reading activities, some post-reading activities, some while reading activities, related live examples in our classroom. So I think I have shared my reading skill practice. If someone wants to add, you are welcome. Unmute yourself and share. आप अपनी क्लासरूम का कोई रीडिंग प्रैक्टिस का एग्जाम्पल भी शेयर कर सकते हैं. आप किस तरह से करते हैं इस चीज को आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वन वे नहीं होना चाहिए कुछ भी. तो आप रीडिंग प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा प्रैक्टिसाइज कराने के लिए क्या करते हैं? ऐसे तो बहुत सारे रीडिंग कार्ड मैंने बनाए हुए, बट वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ थोड़े से, और बहुत सारा मटेरियल शेयर कर चुकी. तो हमने रीडिंग स्किल के कार्ड बनाए हुए हैं ऑलरेडी. तो आप लोग किस तरह से करते हैं अपनी क्लास में? कोई एक एक्सपीरियंस मुझे अगर कोई टीचर बताना चाहे प्लीज. रीडिंग प्रैक्टिस के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? यस, न्यूज़पेपर, वेरी नाइस. न्यूज़पेपर कटिंग, नोटिस बोर्ड. यस, थैंक यू. सम मोर शेयरिंग. I want to hear more from you all, please. Ma'am, may I? Yes, sir. Ma'am, actually, I invite my students to write Yes. something on the board and then ask other students to read it.
Okay, thank you, Praveen sir. Yes. Ma'am, I involve. Sir, your voice is not audible. Actually, some disturbance is there. Ma'am, actually, in this way, I involve all the students in active reading. Thank you. Actually, I have saw last time during grammar teaching, I have shared some reading card with you all. These about letters and words and some small paragraph and story also. I have shared with you all. कि जिसमें बच्चा मेरा मैं उसको रीडिंग प्रैक्टिस करा रही हूँ तो बच्चे को लेटर आता है तो लेटर से वो नेक्स्ट मूव करेगा किस पे वर्ड पे वर्ड वो बच्चा ठीक से पढ़ पा रहा है तो मैं उसको फिर उससे थोड़ा सा हार्ड दे दूंगी पैराग्राफ पे पैराग्राफ बच्चा ठीक से पढ़ने के लिए लग रहा है कि वो कर पा रहा है तो मैं उसको स्टोरी पे ले जाती हूँ कि स्टोरी बच्चा पढ़ पा रहा है तो वो कंटेंट हमें प्रोवाइड कराया है डीओई ने ही बच्चों की रीडिंग प्रैक्टिस के लिए आपको शायद आप सभी न्यूली अपॉइंटेड हैं तो मैं उसकी इमेज आपके साथ शेयर कर दूंगी वो लाइव मैंने आपको दिखाया था पिछली बार फोल्डर में तो मुझे लगा कि वो सब मैं दिखा चुकी तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाह रही थी वापस से तो इसलिए मैंने उस कंटेंट को नहीं रखा तो रीडिंग कार्ड हमने छोटे छोटे बनाए हैं जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जैसे अभी हमने विलियम शेक्सपियर की कोटेशन अभी शेयर की थी किसी तरह से लाइब्रेरी में आपने देखा होगा कि जगह जगह बहुत सारी कोटेशंस लगी होती हैं स्कूल में इंफॉर्मेशन लगी होती है जिनको बच्चा इजिली पढ़ता है और रीडिंग स्किल के लिए हम जो मोरल टीचिंग के थॉट्स हम बच्चों को पढ़ाते हैं वो बहुत छोटे होते हैं तो हमारा जो बच्चा बहुत बड़ा कंटेंट पढ़ने में थोड़ा सा हिचकता है या बच्चे को हमें लगता है कि अभी बिगिनिंग में है हम उसको स्टार्ट करें तो हम उनको वन लाइन के छोटे छोटे थॉट्स हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं जैसे अब्दुल कलाम के थॉट्स हैं एक गांधी जी के थॉट्स हैं स्वामी विवेकानंद जी के थॉट्स हैं या हम इंग्लिश की बात करें तो विलियम शेक्सपियर आपको पता है कि बहुत अच्छे थॉट्स उन्होंने लिखे हैं जिनके ऊपर हमारी पूरी इंग्लिश लिटरेचर हमारा है और साथ में मैंने उस दिन शेयर किया था डायरी ऑफ यंग गर्ल में उनका जो हमारी बहुत सारी बुक्स के चैप्टर में भी बहुत अच्छी अच्छी कोटेशंस और छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो हम रीडिंग स्किल्स के लिए यूज कर सकते हैं जैसे मैंने उस दिन भी शेयर किया था पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल तो इसमें बहुत सारा मैसेज है और रीडिंग जब हम इसकी करते हैं तो हमें समझ आता है कि बच्चा हमारा किस हद तक अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है there is shared by newspaper nowadays there is very much practice done by the students for WhatsApp messages if someone want to share about their WhatsApp messages and reading skills जो WhatsApp पे बच्चे मैसेजेस भेजते हैं उनका रीडिंग स्किल से क्या रिलेशन है क्योंकि WhatsApp पे वो कई बार मैसेज तो पूरा दे रहे हैं बट वो प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में हम उसको कैसे कर सकते हैं यूज बस मैं इतना थोड़ा सा आपसे शेयरिंग चाहूंगी इसमें कि जो WhatsApp की उनकी जो लैंग्वेज है हम उसको रीडिंग स्किल में हेल्प के लिए किस तरह से उनको मोटिवेट कर सकते हैं बच्चों को नो शेयरिंग फ्रॉम एनीवन okay now some more information I want to share with you all कि व्हाट्सएप की इंफॉर्मेशन की तो हमने बात की कि बच्चे को हम मोटिवेट करें एज ए इंग्लिश टीचर की बच्चा जो लिखे वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखे और जिसके लिए उसको ग्रामर इंप्रूव करने के लिए हम बच्चे को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आप ग्रामरली ऐप को कीबोर्ड से कनेक्ट करें तो आपकी जो माइनर मिस्टेक्स होती हैं लिखने में स्पेलिंग में या आपके प्रपोजिशंस लगाने में या आर्टिकल्स में वो बिल्कुल करेक्ट होके हमें दिख जाती है तो टेक्निकली हम अपने आप को इस तरह से रीडिंग के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं तो जो कंटेंट बच्चा हमें लिख के देगा वो रीडेबल भी होना चाहिए इसके अलावा कुछ और एक्टिविटीज हम रीडिंग स्किल के लिए डेवलप कर सकते हैं जैसे आपने अनसीन पैसेज देखा है कि हमें उसमें रीडिंग एंड रीडिंग जब तक बच्चा अनसीन पैसेज को बार बार रीड नहीं करता हमारा सेक्शन ए 9th 10th में रीडिंग का ही है तो रीडिंग प्रैक्टिस के लिए बच्चे को इजी कंटेंट बताया जाए उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट की बुक्स उनको कही जाए कि वो बच्चे पढ़ें तो हम उसके लिए स्टोरी बुक सजेस्ट कर सकते हैं बच्चों को एक छोटी सी 100 वर्ड की कोई भी स्टोरी हम बच्चों को अपने ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में क्योंकि अभी जो क्लासरूम सिनेरियो है ब्लेंडेड लर्निंग का टाइम है तो इसमें हम बच्चों को किस तरह से रीडिंग स्किल को डेवलप करने के लिए कंटेंट भेजते हैं इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन टीचर तो you may share some small stories actually stories are very interesting for our students 100 वर्ड की कोई भी स्टोरी आप बच्चों को दे दीजिए बच्चा उसको रीड करेगा और रीड करके उसको आप उसकी ऑडियो भी मांग सकते हैं बच्चे की कि बेटा आप मुझे व्हाट्सएप पे ऑडियो भेज दीजिए आपने रीडिंग किया तो रीडिंग की प्रैक्टिस एक्चुअली इट नीड्स प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस
So this is all from my side. If ma'am, over to you, Chanchal ma'am. Okay, thank you, madam. Thank you, Yes, ma'am. Dr. Poonam. And Yes, I will share my all video. I have used in my PPT with participants in Telegram group. okay, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. You share your PPTs in the Telegram group. That's a good idea. And thanks a lot. And I think this session is very much interesting. And I think the number of activities you have discussed, they were quite interesting and practical also. So now for the next session, we have with us Dr. K.N. Shastri, and he will be talking on substance abuse. Now over to you, sir. थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने हमारा परिचय करा दिया। और मैं अब इस सत्र में जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे अवेलेबल हैं, जितने भी शिक्षक साथी हैं, सबको मेरा नमस्कार। और अब मैं सब्सटेंस अब्यूज पर अपना सेशन प्रारंभ कर रहा हूं। मैं एक छोटी सी मैं अपना अनुभव सुना रहा हूं, एक छोटा सा स्टोरी सुना रहा हूं, जिसे आप ध्यानपूर्वक जरा सुनिए। और ये कोई बनी बनाई या बनाई हुई कोई इस तरह की नहीं, ये जो है जीवन का अनुभव है। 2007 की मैं बात बता रहा हूँ, जबकि अभी आरटी नहीं बना था और सर्व शिक्षा अभियान चल रहा था। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ये कहा गया था उसके डॉक्यूमेंट्स में कि जो विद्यालयों का मालिकाना हक है वो समुदाय को दिया जाएगा। जिस समुदाय के लिए विद्यालय है, समुदाय के हाथों में सौंपा जाएगा विद्यालयों को मालिकाना हक। इसका मतलब है कि विद्यालय उसी तरह से चलेंगे जैसा समुदाय चाहता है ना। बिना समुदाय के इजाजत के विद्यालय की कोई एक्टिविटी संपन्न नहीं होगी। ऐसा इस तरह का इतना बड़ा जब गवर्नमेंट डिसीजन ले रही हो तो उसके लिए तैयारी तो पहले से करनी ही होगी। तो इसमें 2000 से प्रारंभ हुआ सर्व शिक्षा अभियान, जो 2010 तक, और उसकी कुछ एक्टिविटी 2015 तक चली है। तो उनमें एक क्लास था कि भाई जो कम्युनिटी मेंबर हैं उनको 2 दिन की जो है कम्युनिटी लीडर ट्रेनिंग की जाए, ताकि कुछ लोग लीड तो कर सके कम्युनिटी को लीड कौन करेगा। तो कुछ लोग तो सक्षम हो, समर्थ हो, और जब वो इस बात को वो समझ सके कि हम विद्यालय में जब जाएंगे तो विद्यालय में किस तरह की गतिविधियां होती हैं और उन गतिविधियों में हमारी हिस्सेदारी किस तरह की होगी, विद्यालय में किस तरह का जो प्रशासन चलता है और उस प्रशासन के साथ हमारी भागीदारी कैसे होगी, विद्यालय की जो शैक्षिक गतिविधियां हैं उनमें हमारा जो पार्टिसिपेशन कैसा होगा, उसको हम कैसे ड्राइव कर पाएंगे। इन सब बातों पर हमें कम्युनिटी के साथ बैठकर विचार करना था और उनको तैयार करना था कि हम जो है जब सरकार यह निर्णय ले कि अब मालिकाना हक समुदाय को दिया जा रहा, तो समुदाय के लोग समर्थ हों कि वो मालिकाना हक ले सके, यानी विद्यालय के प्रबंध में अपनी भागीदारी निभा सके। तो इसी क्रम में कृष्णानगर क्षेत्र में, इस डिस्ट्रिक्ट के कृष्णानगर क्षेत्र में कृष्णानगर का ईडीएमसी स्कूल है। तो वहां पर कम्युनिटी लीडर की ट्रेनिंग होनी थी। 50 लोगों को उसमें कम्युनिटी लीडर यानी कि जो बच्चों के माँ बाप को बुलाया गया था। और ये मीटिंग 10 बजे से शुरू होनी थी और 2.5 घंटे चलना था, यानी 12:30 बजे चलनी थी। मैं वहां लगभग 10:15 बजे पहुंचा था, थोड़ा मुझे विलम्ब हो गया था। जब मैं पहुंचा तो मैं क्या देख रहा हूँ कि विद्यालय का गेट बंद है, और केवल मेन गेट ही नहीं बंद है बल्कि जो मेन बिल्डिंग है उसका भी, उस पर भी गेट लगा हुआ है, चैनल गेट लगा हुआ है, और वो भी बंद है, दोनों ही बंद है। मैं सोचने लगा कहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम किसी और स्कूल में तो नहीं है, लेकिन हमने ध्यान से देखा कि नहीं, लिखा भी है कृष्णानगर का ही ये स्कूल है और ट्रेनिंग प्रोग्राम कृष्णानगर में ही होना है। तो मैं सोच ही रहा था गेट पर खड़ा खड़ा, तक एक मैडम दिखाई पड़ी, और जब उन्होंने मुझे देखा तो अपना चैनल गेट खोला और फिर वो निकल करके आए बाहर। गेट भी उन्होंने खुद ही खोला और फिर मुझे एंट्री दी और फिर मुझे ले करके जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर गई, जहाँ पर कि लगभग 40 के आसपास
शिक्षक 35 से 40 के आसपास विद्यालय में लोग उपस्थित थे, जो कम्युनिटी लीडर थे, यानी जो बच्चों के माँ बाप थे, अभिभावक थे, माता पिता थे, और उनसे जो कोऑर्डिनेटर थे प्रोग्राम के, वो बातचीत कर रहे थे। चूंकि मैं रिसोर्स पर्सन की हैसियत से वहां पर था, तो मेरे ना पहुंचे होने के कारण वे लोग उनसे बातचीत कर रहे थे। बातचीत के दौरान वे पूछ रहे थे बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनका मिड डे मील और तरह तरह की चीजों पर उनसे राय ले रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। तो उसमें से गार्जियंस ने कहा था कि भाई विद्यालय में सब कुछ तो ठीक है, बिल्डिंग भी अच्छी है और टीचर्स भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बाकी पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई नहीं होती है। तो पूछ रहे थे कि भाई आखिर पढ़ाई क्यों नहीं होती है? पढ़ाई तो जब टीचर पूरे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, और तो पढ़ाई क्यों नहीं होती? कहा बस नहीं होती, क्या बताया जाए, बच्चों का जो बच्चे क्या पढ़ते हैं ये समझ में नहीं आता। बच्चे जो ठीक से किताबें भी नहीं पढ़ पाते, और लिखना लिखना भी उनका जो पुअर है, बहुत गलतियां करते हैं, कई बच्चे लिख भी नहीं पाते हैं। तो बच्चों को मैथ तो दूर की कौड़ी है, उनको 100 तक गिनती भी याद नहीं है, तो कैसे कहे कि अच्छी पढ़ाई हो रही है? तो ये बात चल ही रही थी, तब तक हम लोग पहुंच गए, मैं पहुंच गया। तो हमने उनसे पूछा कि भाई एक बात बताइए, आप कह रहे हैं पढ़ाई नहीं हो रही है, और तो मैं विद्यालय के प्रिंसिपल को बुलवाता हूँ और उन्हीं से पूछते हैं कि पढ़ाई नहीं हो रही है या हो रही है, या उनकी क्या राय है, क्या वो सोचती हैं। तुरंत हमने भेजा मैसेज नीचे, और प्रिंसिपल मैम 10 मिनट के बाद आई, और तो हम लोग चर्चा कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मैडम, ये लोग कह रहे हैं कि विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती अच्छी, उससे ये लोग संतुष्ट नहीं है। कह रहे हैं बिल्डिंग अच्छी है, टीचर अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन पढ़ाई नहीं होती। बच्चों को सेटिस्फैक्ट्री, संतोषप्रद ढंग से जो है कुछ आता नहीं है, गिनती पहाड़ा ये सब नहीं आ रहा, नहीं बच्चे बता पाते। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बात सही है, जो ये लोग कह रहे हैं वो ठीक है कि पढ़ाई, हम भी बच्चों से संतुष्ट नहीं है। आप का दिक्कत ये है कि बच्चे विद्यालय में आते नहीं है, बच्चों में विद्यालय में उपस्थिति बच्चों की बहुत ही कम होती है, और इस वजह से हमारे अध्यापक ठीक से पढ़ाते नहीं हैं। बच्चों में बच्चे जो आते हैं वो भी हाँ, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है ठीक से। उसका कारण यही है कि बच्चे जो है पूरी मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, और गार्जियन बच्चों को भेजते नहीं है। अगर बच्चे गार्जियन स्कूल में आ जाए बच्चों को ले करके, और बच्चों को यहाँ पहुँचा दे और प्रॉपर यहाँ से ले जाए, तो बच्चों की उपस्थिति विद्यालय में अच्छी हो, तो हमारे टीचर्स अच्छे पढ़ाएंगे। अब दिक्कत यह है कि जो आज बच्चा आएगा वो कल नहीं आता, कल जो आएगा वो परसों नहीं आएगा, पहला वाला पता नहीं तीसरे दिन आएगा, चौथे दिन आएगा, तो बच्चों की कंटिन्यूटी नहीं बन पाती। इस वजह से बच्चों की जो पढ़ाई है वो अच्छी नहीं हो पाती। मैंने कहा कि भाई तो ये तो गलती आप लोगों की है, इन लोगों की है कि बच्चों को विद्यालय क्यों नहीं भेजते हैं। हमने कहा कि भाई आप लोग बच्चों को विद्यालय क्यों नहीं जिम्मेदारी से भेजते? कहा सर भेजते तो हैं, रोज हमारे बच्चे विद्यालय आते हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? आप कह रहे हैं रोज आते हैं, प्रिंसिपल कह रहे हैं कि बच्चों की उपस्थिति नहीं होती, बहुत कम होती है, 10% से भी कम होती है। अब बताइए, जब जहां पर 90% बच्चे जो है गायब रहेंगे, 10% से कैसे पढ़ाई होगी? और भी बदल बदल के बच्चे आते हैं, तो ऐसे कैसे पढ़ाई होगी? वो तो बच्चों को कंटिन्यूअस आना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं भेजते तो है सर, बच्चे तो विद्यालय आते हैं। मैंने कहा कि भाई क्या बात है, क्या गड़बड़ है? हमने कहा अच्छा कितने लोग जो है बच्चों को विद्यालय तक छोड़ते हैं और ले जाते हैं? तो उसमें से 10% से भी कम लोग निकले जिन्होंने हाथ उठा करके बताया कि हम बच्चों को विद्यालय तक भेजते हैं और विद्यालय से ही आकर के गेट से ले जाते हैं। हमने कहा बाकी लोग? बाकी लोग तो कह रहे भाई बच्चों को विद्यालय भेजते हैं, लेकिन हम बच्चों को विद्यालय तक नहीं छोड़ते, और हम भेज देते हैं और बच्चे पढ़ जाते हैं, लेकिन बच्चे लौटते शाम को ही है। सुबह ऐसा नहीं है कि भेजा और फिर ये आ गए, ऐसा नहीं है।
शाम को बच्चे लौटते हैं, जब समय होता है छुट्टी का तो छुट्टी के टाइम ही बच्चे आते हैं, लेकिन जाते रोज है। तब तो ये तो मामला और भी पेचीदा हो गया कि बच्चे रोज जाते भी हैं लेकिन वे विद्यालय में पहुंचते ही नहीं है। ये तो और भी बुरा है। इसका मतलब यह है कि बच्चे कहीं न कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, कहीं रास्ते में रुक जाते हैं या और कुछ गड़बड़ है। तो बच्चों की तो ट्रैकिंग करनी चाहिए कि आखिर बच्चे कहाँ तक पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते हैं। हमने कहा कि अच्छा बताइए, आप लोग सब इसी कॉलोनी के ही हैं और कॉलोनी से ही आते हैं, और तो आप लोग बच्चों को आते जाते हुए देखते नहीं है क्या? तो उसमें से एक व्यक्ति उठ के खड़ा हुआ, कहा कि हाँ मैं बता सकता हूँ। असली बात यह है कि बच्चे घर से आते तो हैं, लेकिन जो घर से और विद्यालय के बीच में जो नाला है, उस पर जो पुलिया है, वहीं पर जो है बच्चे बैठे रहते हैं। और वहीं पर जो है, जो उधर की तरफ जो है, पार्क तो नहीं है लेकिन पार्क जैसी जगह है, वहां पर लोग बैठे रहते हैं और वहां पर जो ताश खेलते हैं और जो है जुआ भी खेलते हैं, और इस तरह का जो बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग दारू भी पीते हैं, और ऐसे समय लोग पास करते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह के बैठे रहते हैं, तो बच्चे भी उन्हीं के साथ वहीं पर बैठ जाते हैं। अच्छा भाई, बच्चे वहां बैठ जाते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि बच्चों को कोई और ही पढ़ा रहा है। कहाँ सर? उन्होंने कहा तो कौन पढ़ा रहा है? कहा सर वही जो वहां रहते हैं वही पढ़ा रहे हैं, वही बीड़ी वाले, सुर्ती वाले, तंबाकू वाले और हीरोइन वाले और गांजा वाले और शराब वाले और ताश खेलने वाले, और उनमें से कई हैं जो पॉकेट मारने का भी काम करते हैं, कई नशे के व्यापारी भी हैं जो पुड़िया भी बेचते हैं। तो ये सारे के सारे काम वहाँ होते हैं सर, और वही बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो उसमें इन्वॉल्व भी हो जाते हैं, है ना। हमने कहा भाई तो आपने नहीं कुछ टोका टाका, कुछ कहा नहीं? कहा सर मैं क्या कहता, जब ये लोग इतने लोग कोई कुछ नहीं कह रहा तो मुझे तो रोज यहीं पर खड़ा होना होता है, और यहीं पर जो है मैं जाता हूँ, देखता रहता हूँ, और वहीं पर कुछ ऐसे लोग हैं जो असामाजिक तत्व हैं, जो हमको परेशान कर सकते हैं, मेरे साथ मारपीट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं तो सर बता ही सकता हूँ। अब मेरी अकेले की हैसियत तो नहीं है कि मैं कोई एक्शन लूँ। हाँ, सब लोग सहयोग दें तो ये काम हो सकता है कुछ। तो हुआ कि भाई ये बताइए कि इतनी बड़ी घटना हो गई, इतनी बड़ी बात हो गई, बच्चों के साथ ये सारा कुछ हो रहा है और आप लोग देख नहीं रहे हैं। आप लोग बच्चों को एक दिन भी पता नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को विद्यालय आना चाहिए, विद्यालय पूछना चाहिए। आप लोगों ने आ करके साल में एक दिन के अध्यापकों से पूछा कि हमारे बच्चों को पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है। आज हमने दूसरे पर्पज से आपको बुलाया है तो आज ये सब बातें आप बता रहे हैं। वैसे आप विद्यालय में आकर के प्रिंसिपल को नहीं कह सकते, नहीं पूछ सकते, उनका सहयोग नहीं कर सकते। हाँ, और विद्यालय को भी कुछ गरज नहीं है। अरे भाई उसको भी कम्युनिटी में जाना चाहिए, समुदाय में जाना चाहिए, वो मोहल्ला बस्ती में जाना चाहिए, और वहां जाकर के गार्जियन से बातचीत करनी चाहिए कि भाई आपके बच्चे की ये प्रॉब्लम है, आपकी बच्चे की ये समस्या है, आप कुछ हमारा सहयोग करिए। तो विद्यालय को भी समुदाय में जाकर के सहयोग मांगना चाहिए, और समुदाय को भी विद्यालय आना चाहिए और बताना चाहिए कि भाई हम आपकी पढ़ाई से संतुष्ट नहीं है। हाँ, आप हमारे बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। ना विद्यालय को कुछ गरज है और ना तो समुदाय को कोई गरज है। सब अपने अपने में मस्त है। आप लोग अपने बच्चों को विद्यालय भेज करके जो है अपनी संतुष्टि कर ली कि बच्चे विद्यालय चले गए, चाहे वो पढ़े चाहे ना पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने मान लिया बच्चों को तो सब्जियां ही बेचनी है ना, बच्चों को तो गाड़ी ही चलानी है ना, बच्चों को तो यही काम करने हैं ना, बच्चों को नौकरी चाकरी तो मिलनी नहीं। अरे इसमें कितने बच्चे ऐसे होंगे जो जो पता नहीं कहाँ तक पहुंचेंगे, राजनेता बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, है ना, और बड़े बड़े इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेसर डॉक्टर बनेंगे, इन्हीं बच्चों में से बनते। क्योंकि प्रतिभा जो है वो अमीर और गरीब और छोटे और बड़े का कोई भेदभाव नहीं करती। प्रतिभा तो प्रतिभा है। तो प्रतिभा को तो अवसर मिलना चाहिए, और आप लोग जो अवसर को छीन रहे हैं, बच्चों को विद्यालय में ठीक से पहुंचने में मदद ही नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे तो छोटे हैं ना, बच्चे तो समझदार नहीं है, बच्चे तो अपने हित की बात नहीं समझते। इनके हित की बात तो आपको करनी पड़ेगी ना। इनको सोशल जस्टिस, इनके साथ सामाजिक न्याय कौन करेगा, इनकी न्याय की लड़ाई कौन लड़ेगा? तो आप इनके माँ बाप हैं, आप ही इनके जो हित की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। अब बताइए कौन लड़ने आएगा? हा? तो ये तो आप लोग कितना बड़ा जो है नुकसान कर रहे हैं, अपना भी कर रहे हैं और इन बच्चों का भी कर रहे हैं, और समाज का और देश का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। हा? तो ये तो बहुत पहले ही बात है, आपस में बैठ करके होनी चाहिए। आप लोग पेरेंट्स मीटिंग नहीं करते हैं क्या? वो कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ने बताया कि पेरेंट्स मीटिंग में गार्जियन आते ही नहीं है। रखा तो जाता है महीने में एक दिन, लेकिन को आए तब ना, इक्का दुक्का कोई कोई आ जाता है। बाकी वही जो लोग छोड़ने आते हैं
उन्हीं में से कोई आ जाता है, बाकी लोग आते ही नहीं है, क्या किया जाए। तो उस दिन बैठ करके तय हुआ कि आज से सारे गार्जियन, सारे बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों को ले करके विद्यालय तक आएंगे और विद्यालय छोड़ करके जाएंगे, और जब विद्यालय का टाइम ओवर होगा तो उस समय तब तक विद्यालय से बच्चों को नहीं छोड़ा जाएगा जब तक उनके माँ बाप विद्यालय में बच्चों को लेने नहीं आएंगे। ये तय हुआ। और प्रिंसिपल ने कहा सर मेरी गारंटी है आप फिर आइएगा और फिर ये देखिएगा कि अगर ये बच्चे अगर रेगुलर हमारे विद्यालय में आते हैं तो इनकी पढ़ाई होगी। और इसलिए कि मैंने देखे 2-2 गेट इसीलिए बनवा रखे हैं कि बच्चा विद्यालय में आ जाएगा तो गेट बंद हो जाएगा, बच्चा बाहर जा नहीं सकता। जब तक विद्यालय का समय खत्म नहीं होगा, वर्किंग आवर्स खत्म नहीं होंगे, जब तक छुट्टी नहीं होगी तब तक जो है ये गेट नहीं खुलेगा। और जब माँ बाप आएंगे लेने के लिए तभी उनको जो बच्चा दिया जाएगा। तो ये देख लिए, मैं ये उदाहरण आपके सामने ये पेश किया, इसलिए मैंने यह चर्चा आपके साथ की कि सबसे बड़ा जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई में और बच्चों को अच्छी आदतें सीखने में और बच्चे को एक समझदार नागरिक बनाने में जो सबसे बड़ा गैप है वो है कम्युनिकेशन गैप। माने हम दूसरे की बात, अपनी बात ना तो दूसरे तक पहुंचा रहे हैं और ना तो दूसरे की बात अपने तक ले आ रहे हैं, ना तो उनकी बात सुन रहे हैं, और ना हम जो है संवाद जारी रखना चाहते हैं। ना विद्यालय चाहता है और ना ही समुदाय चाहता है। तो जब तक ये जो है असंवाद की स्थिति बनी रहेगी तब तक जो है समस्याएं ज्यों के त्यों ही बनी नहीं रहेंगी, बल्कि ये बढ़ती जाएंगी और भी बढ़ेंगी और भी स्थितियां खराब होंगी। भाई अगर हम लोग आपस में बात ही नहीं करेंगे, आपस में अगर समस्याओं को मिल बैठ करके हल करने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर तो ये तो समस्याएं बढ़ती ही जाएंगी ना। अब देखिए इसी से जुड़ा हुआ है पहलू है, उसमें आपने देख लिया कि बच्चों में जो बुरी आदतें पनप रही हैं कि बच्चे बीड़ी पी रहे हैं, बच्चे तंबाकू पी रहे हैं, बच्चे जो है खैनी खा रहे हैं, और बच्चे जो है फ्रूट को सूंघ रहे हैं, और बच्चे जो है बीड़ी 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 भी पी रहे हैं और सिगरेट भी पी रहे हैं, और इस तरह के नशे। और कई बच्चे जो है ऐसे लोगों की संगत में, बुरी संगत में पड़ गए कि वो जो है वो जो क्या हीरोइन वगैरह जो होता है वो सब भी, और इंजेक्शन भी ड्रग्स का लेने लगे। तो इस तरह ऐसी स्थिति आखिर बच्चों की क्यों हो जाती है, किस तरह से हो जाती है? उसका कारण बहुत बड़ा ये है कि जो हमारे अध्यापक साथी हैं वो विद्यालय में क्लास में पढ़ाने के लिए जब जाते हैं तो उनका केवल एक ही टारगेट होता है, एक ही लक्ष्य होता है। वो क्या कि भाई मुझे तनख्वाह तो पढ़ाने की मिलती है ना, जो कंटेंट है, जो विषय सामग्री है, जो किताब में लिखा हुआ है उसको हमें जो है बच्चों तक पहुंचा दें, पाठ को हम पढ़ा दें, बस हो गया हमारा काम, और कुछ नहीं। पाठ पढ़ाना ही हमारा काम, हमने पढ़ा दिया और आ गए वापस। और ये नहीं देखा कि आखिर बच्चों की वास्तविक समस्या क्या है। जो हमने पढ़ाया आखिर बच्चों को उन्होंने अमल किया कि नहीं किया, बच्चों ने सुना कि नहीं सुना, समझा कि नहीं समझा, उसका जवाब दिया कि नहीं दिया, पूछा ही नहीं, पूछा ही नहीं। चाहे बच्चे सुने ना सुने, देखें ना देखें, चाहे पढ़े ना पढ़े, हमारा काम केवल जो है भाषण देना है, हमारा केवल पाठ पढ़ा देना है, हमारा केवल जो कविता का अर्थ बता देना है। अरे भाई ये तो बताइए कि आप कविता का अर्थ बता ही क्यों रहे हैं, क्यों ये कविता आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है? वो ये कविता जो है बच्चे के आचरण में क्या परिवर्तन लाएगी, बच्चे को क्या बनाएगी, कैसे बनाएगी, कहाँ ये ले जाएगी, क्या प्रेरणा पैदा कर रही है? और जिस अभिप्राय से ये पाठ आपके किताब में पाठ्यक्रम में रखा गया है उसका आशय तो आप ही जानते हैं ना, उसका उद्देश्य तो आपको पता है। तो ये आपने एक बार भी देखा कि ऑब्जेक्टिव लेसन के आप अचीव हुए कि नहीं हुए? तो ऐसे हमारे शिक्षक साथी जो नहीं रखते हैं उनके क्लासेज में बच्चे आते तो हैं लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि हमारा बच्चा जो है मेन स्ट्रीम से जो हट रहा है, क्लास से वो भाग रहा है, क्लास में वो रहना नहीं चाहता, पढ़ाई करना नहीं चाहता, बच्चों के साथ मारपीट करता है और गुस्सा करता है और कमजोर भी हो रहा है, कोई होमवर्क दे दो तो करके नहीं लाता। ये सब जब बच्चों में स्वभाव परिवर्तन होने लगता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है पक्का। और ये बच्चा जो है पढ़ाई लिखाई से इसने किनारा कर लिया और ये किसी गलत संगत में पड़ गया, है ना। तो बच्चे की पहचान करना
कि बच्चा जो है किसी दुर्व्यसन का, किसी नशे का शिकार नहीं है, पहला काम। तो क्या क्या मुख्य लक्षण होंगे बच्चे में, क्या देखने को मिलेगा? पहली बात है कि जो बच्चा नशे के गिरफ्त में आ जाएगा उसका व्यवहार परिवर्तन हो जाएगा। कैसा व्यवहार करने लगेगा? असामाजिक व्यवहार करेगा, माने मेल मिलाप नहीं रखेगा, लोगों से बातचीत नहीं करेगा, लोगों से जो है वो खेल कूद और बच्चों के साथ मिल करके नहीं रहेगा, वो जो है इनसे अलग होता जाएगा, अपने दोस्तों से अलग, अपने जो है क्लासमेट है उनसे अलग, अपने टीचर से अलग, अपने माँ बाप से अलग, अपने अड़ोसी पड़ोसी से अलग। दोस्ती किससे? जो नशे के साथी हैं, जो नशा करते हैं उनका वो साथी बन जाता है, और बाकी सबके जो है सबसे अपने अपने जो रिश्ते नाते हैं वो तोड़ देता है। ऐसा इस तरह का बच्चा हो जाता है। बच्चा न बोलता है, ना किसी का जवाब देता है, वो नीचे सिर करके बैठ जाएगा। किताब कभी लाता है, कभी नहीं लाता। अभी कभी ऐसे बच्चे का आप किताब बस्ता चेक करके देखोगे तो आपको पता लगेगा। बच्चा जब बच्चे का आप देखोगे तो उसे पता चलेगा कौन सी किताब लाया, कौन सी किताब नहीं लाया, बस्ते में उसने रखा क्या हुआ है, किस किस के सामान रखा हुआ है ना। तो ये सब आप करोगे तो पता आपको लगेगा। ऐसे ही बच्चे को आप जो है फिर टटोलोगे तो पता चलेगा कि ये किसी न किसी नशे की गिरफ्त में है। नशे छोटे बड़े हर तरह के होते हैं। छोटे नशे जो होते हैं उनका तो अभी बच्चा उसका आदी नहीं हुआ है, तो आप उसको समझा करके, बुझा करके और उसको जो है नशे की दुनिया से दूर कर सकते हो। लेकिन अगर बच्चा उसका आदी हो चुका है, अगर उसका जो बिल्कुल उसके बस में हो गया नशे के, तो आपके बस की बात नहीं है कि आप जो है उस ड्रग्स से, नशे से आप उसको दूर कर सको। क्यों? इसलिए कि उसके लक्षण जो है इतने प्रबल होते हैं कि अगर टाइम पर उसको नशा नहीं मिला, इंजेक्शन नहीं मिला या जो भी है, जैसे कुछ लोग इंजेक्शन से नशा लेते हैं, कुछ पी करके लेते हैं, कुछ अलग अलग तरह से, तो अगर नहीं मिला तो उसका शरीर जो है बुरी तरह से टूटने लगता है और वो तनाव में आ जाता है और वो पड़ा रहता है, पेट में दर्द की शिकायत करेगा और करेगा। तो इस तरह के बच्चा जो है इतना मजबूर हो जाता है कि बिना नशे के वो रह ही नहीं सकता है। जब तक वो नशा नहीं लेगा तब तक वो सामान्य स्थिति में नहीं आएगा। तो नशे की स्थिति ही उसकी सामान्य स्थिति है, और जब नशा खत्म हो जाएगा तो वो उसके लिए असामान्य स्थिति है। तो जो हमारे लिए सामान्य स्थिति है वो उस बच्चे के लिए असामान्य स्थिति है, और जो हमारे लिए असामान्य स्थिति है वो उसके लिए सामान्य स्थिति है। इस तरह का परिवर्तन बच्चे के अंदर आ जाता है। और क्या बच्चे और कैसे पहचानेंगे कि बच्चा जो है नशे का आदी है या कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहा है? हमने बताया कि वो एकेडमिकली जो है वीक हो जाएगा, पढ़ने लिखने में बिल्कुल वो मन नहीं लगेगा उसका, क्लास में आएगा भी नहीं, और आएगा तो बैठा रहेगा यूं ही, किसी दूसरे बच्चे को परेशान करता रहेगा, मारपीट करता रहेगा, झगड़ा कर लेगा, गुस्सा कर लेगा, और आप भी पूछोगे तो आपकी बातों का जवाब नहीं देगा और नजरें झुकाए रहेगा। इस तरह का बिहेवियर बच्चे में आपको दिखाई देगा। पढ़ने लिखने में तो बिल्कुल उसका मन रहेगा ही नहीं, पढ़ना तो चाहेगा ही नहीं, पीछे देखेगा, उधर देखेगा। तो ये समझ लीजिए कि बच्चा जो है निश्चित रूप से किसी नशे की गिरफ्त में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब ये आपने पहचान लिया और देख लिया और कुछ समझ में आ गया, तो अब आप उसके कन्फर्म कैसे करेंगे? कन्फर्म तो उसके साथियों से पूछिए, उसके साथी आपको बहुत सारा कुछ बता देंगे, उसके पड़ोस का पड़ोसी बता देगा, आने जाने वाले रास्ते में जो लोग हैं वे बता देंगे। तो इस तरह से विभिन्न माध्यमों से आपको ये पता लग जाएगा कि ये बच्चा नशे की गिरफ्त में है। और अगर उस बच्चे को समझा बुझा करके और राजी कर लिया तो वो भी सारी बातें बता देगा आपने, है ना। बच्चा खुद परेशान होता है, बच्चे को खुद पता है कि मैं नशे की गिरफ्त में हूँ और मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता हूँ, नशे ने मुझको इतना अपने अंदर अपने अधीन कर लिया है कि मैं नशे से बाहर नहीं जा सकता। तो बिल्कुल बच्चा नशे के अधीन हो चुका होता है, वो चाह करके भी नशे की दुनिया से बाहर नहीं निकल सकता, वो मजबूर हो जाता है। तो ऐसे मजबूर व्यक्ति को कैसे आप इंपावर करेंगे, कैसे उसको जो है नशे की दुनिया से बाहर निकालेंगे? तो इसके लिए जरूरत इस बात की है कि आप सबसे पहले आप अपने विद्यालय में जो प्रिंसिपल हैं उनसे परमिशन लीजिए, और उससे भी पहले आप जो कुल ईवीजीसी आपके विद्यालयों में हैं, ईवीजीसी की मदद लीजिए। ईवीजीसी बहुत कुछ जानते हैं
और वो बच्चों को कुछ न कुछ गाइड करने लायक जो होगा वो गाइड कर देंगे, और आपको भी गाइड कर देंगे कि इस केस में क्या हो सकता है, आपको क्या करना चाहिए। तो आप परमिशन लीजिए अपने प्रिंसिपल से, उसको बताइए कि बच्चे की क्या स्थिति है और क्या करना चाहिए। तो अगला कदम ये है कि आप बच्चे के माँ से संपर्क करिए, या तो उनको विद्यालय में बुलवाइए, या अगर नहीं आ रहे हैं तो उनके घर भी जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रिंसिपल की परमिशन लेनी आपको जरूरी है। घर जाइए या उनके माँ बाप को बुलवाइए, तो उनसे बातचीत करिए, उनको बताइए कि आपका बच्चा मुसीबत में है, आपका बच्चा परेशानी में है, और बच्चा जो है ड्रग्स का आदी हो गया है। तो पहली बात तो ये है कि जल्दी बच्चों के माँ बाप स्वीकार नहीं करते हैं कि उनके बच्चे नशे की गिरफ्त में हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है, क्योंकि सामाजिक भय उनको होता है कि समाज क्या कहेगा, ये क्या कह रहे हैं। लेकिन समझाने बुझाने पर वो तैयार हो जाएंगे, और अगर नहीं तैयार होंगे तो आप बहुत कुछ ज्यादा कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए कि बच्चे को अब आपको ले जाना होगा कहाँ पर, नशा मुक्ति केंद्र पर, डॉक्टर के यहाँ ले जाना होगा। तो आपके पास इतना समय होगा नहीं कि आप जो है आप जो है नशा मुक्ति केंद्र पर खुद बच्चे को लेकर के जाएं। जी जी। तो आपको माँ बाप को तैयार करना ही पड़ेगा। माँ बाप जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप उनसे कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, और लोगों का सहयोग लेंगे प्रिंसिपल की मदद से, तो उनके माँ बाप को तैयार करिए कि वो बच्चे को लेकर के नशा मुक्ति केंद्र पर जाए, क्योंकि एक दिन से काम नहीं बनेगा, बच्चे को बार बार ले जाना पड़ेगा, है ना। तो आप तो बार बार जा नहीं सकते, इतना समय आपके पास है नहीं, और भी बच्चों को पढ़ाना है, विद्यालय से इतनी छुट्टी आपको मिलेगी नहीं। तो वहां पर जो है वो डॉक्टर टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि इसकी क्या स्थिति है, तो सहन करने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए उनको जो है कुछ इंजेक्शन भी लगाएंगे, कुछ दवाएं भी देंगे, और इस तरह से उसको फिर से मेन स्ट्रीम करने की ओर ले आएंगे। हो सकता है कि बच्चे को भर्ती भी करना पड़े नशा मुक्ति केंद्र पर, उसको महीने 2 महीने के लिए भर्ती भी करना पड़े, तो वो भर्ती भी करेंगे, और उनका खाना पीना वो सब देंगे। ज्यादातर जो नशा मुक्ति केंद्र हैं, ये जो है एनजीओ द्वारा चलाए जाते हैं, गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाए जाते हैं, जिनको सरकार या विभिन्न सरकारें या विदेशों से भी ग्रांट मिलती है, लेकिन उनकी देख रेख गवर्नमेंट करती है। तो ये केंद्र इसलिए जो है कारगर होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत डेडिकेटेड कर्मचारियों की जरूरत होती है, ऐसे कर्मचारियों की जरूरत होती है, ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो इनकी बातों को समझ सके और इनको हैंडल कर सके, है ना। तो आपसे यही गुजारिश है कि ऐसे बच्चों की पहचान करें, बच्चों को जो है कारणों को जाने, और फिर इनको गार्जियन की मदद से नशा मुक्ति केंद्र तक पहुंचाएं। तभी ये बच्चे जो सामान्य स्थिति में आ सकते हैं, और ये बच्चे सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। कई नशा मुक्ति केंद्रों पर हम लोगों ने जाकर के देखा है, विजिट कराया है डाइट्स के बच्चों का, और देखा है कि वहाँ जो है उनकी स्टोरी भी सुनी है ना, उनसे बातचीत भी किया है। उन्होंने भी हमारे हमारे जो डीएलएड के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ उन्होंने भी बातचीत करी है। उससे काफी कुछ हमको समझने जानने को मिला कि सुधार तो वे भी चाहते हैं, वे भी जो अपना पारिवारिक जीवन खो चुकी हैं, वो पारिवारिक जीवन में वापस तो आना चाहते हैं, लेकिन वो मजबूर है। तो उनकी इच्छा शक्ति को और बढ़ाया जाता है कि ताकि वो जो है मेन स्ट्रीम वो हो सके, अपने अपने पुनः वापस आ सके पूर्व की जिंदगी में। तो इसके लिए इसमें चिकित्सकों की भूमिका हमने आपको बता दी, माता पिता की भूमिका हमने बता दी, अध्यापक की भूमिका हमने बता दी। अब एक चीज रह जाता है जिनके बारे में कि इसमें सरकार की क्या भूमिका है। सरकार की सबसे बड़ी भूमिका ये है कि सरकार इस समस्या को मुद्दा बनाए, है ना, और इसके लिए अभियान चलने चाहिए। यद्यपि सरकार ने बहुत कुछ किया है, इसका मद्य निषेध विभाग है, वह मद्य निषेध विभाग का यही काम होता है कि वो जो है लोगों को प्रेरणा दे, लोगों को बताए, लोगों को समझाए, है ना, एडवर्टीजमेंट के जरिए, सभाओं के जरिए या और माध्यमों से, ताकि लोगों को समझ आए कि ये जो नशे की चीजें हैं ये हमारे लिए कितनी हानिकारक है।
और एक बार नशे की गिरफ्त में आ जाने से निकलना मुश्किल है। इसलिए अच्छा हो कि नशा करे ही ना। आप जानते हैं कि विद्यालय के जो जो उसका जो है क्षेत्र है, विद्यालय के 100 मीटर के परिधि में, रेडियस में कोई नशा की दुकान नहीं हो सकती। गुटखा, तंबाकू, पान, इस तरह की जो चीजें हैं उनकी जो है सेलिंग नहीं हो सकती। और 18 वर्ष से कम का व्यक्ति जो है इन चीजों को नहीं बेच सकता, गुटखा को, तंबाकू को, इन सब चीजों को नहीं बेच सकता। तो ये नियम बनाए गए हैं, है ना। और मद्य निषेध विभाग ने ही जो है प्रेरित करके वो करके नशा मुक्ति केंद्र खुलवाया है ना। तो तरह तरह से सरकार प्रयास करती है, कोशिश करती है और सावधान करती है, बताती है, समझाती है ना, कि आप सब लोग नशे से दूर रहें। कैंसर जैसी बीमारियां भी नशे के इस्तेमाल से हो रही हैं, होती हैं, ये भी आपको बताया जाता है। और उन चीजों की, सिगरेट की डिब्बी पर और गुटखे की डिब्बी पर लिखा भी रहता है ना, कि इससे कैंसर हो सकता है। तो कदाचित आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर ये चेतना आएगी। तो ये सब प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ जो एनजीओज हैं इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मैंने पहले ही बताया है कि एनजीओज की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें समर्पण की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो सरकार का काम है कि वो प्रचार प्रसार करे, विज्ञापन दे, लोगों को समझाए, बताए, इसके लिए नियम बनाए, कानून बनाए। और जो लोग नशे के व्यापारी हैं, है ना, उनको जो गिरफ्तार करे, उनको जो सजा दे। कानून तो बने हुए हैं लेकिन उनका ठीक से इस्तेमाल नहीं होता, कानून का ठीक से अनुपालन नहीं होता। कानून बन जाने से आखिर होगा क्या? जब तक कानून के मुताबिक सजा नहीं होगी, और सजा जो कड़ी सजा नहीं होगी, भाई देखिए, जो लोग बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं उससे बड़ा अपराधी कौन होगा? बच्चों को नशे की गिरफ्त में लाने का मतलब है पूरा जीवन बर्बाद कर देना। और वो जो एक व्यक्ति है जो समाज का एक उत्पादक व्यक्ति बन सकता था, प्रोडक्टिव वर्क कर सकता था, वो जो है अब समाज में समाज की कृपा पर जीने के लिए मजबूर हो गया। क्यों? इसलिए कि उसने वो जो जो कार्य करना था उधर की तरफ से अपना मुख मोड़ लिया और असामाजिक कार्य करने लगा। चोरी, जारी, चमारी, तो क्या है? अब देश की इकोनॉमी तो पीछे ही जाएगी। अब कितने लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं? और आप जानिए, चाहे व्यक्ति छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, जो लोग नशे की गिरफ्त में हैं, कभी वो अच्छा काम नहीं करते, कभी वो जो है समाज के हित का कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद ही जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, है ना। उनका सारा ध्यान बस इस पर आकृष्ट है कि हमको जो है नशा मिलना चाहिए, शराब पीने वाले को शराब मिल जाए, खुश, बाकी उसको दुनिया का कुछ अता पता नहीं। तो ऐसे ही सभी नशे वालों का है कि उनको नशे की चीज मिलनी चाहिए। 100 रुपए की चीज वो 1 रुपए में बेच देंगे, क्या फर्क पड़ता है? बस उनको मतलब है कि बोतल मिल जाए या फिर पुड़िया मिल जाए, बस उतने में वो मस्त हो गए। तो इस देश में जब इतने लोग जब नशे की गिरफ्त में हैं, और इसी वजह से देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, इसी वजह से कार्यालयों में और अन्य जगहों पर, सरकार में भी, और आप देखते हैं कि इलेक्शन के समय जो है कितनी शराब पकड़ी जाती है। आखिर वो शराब सब कहाँ जाता है और क्यों खिलाया पिलाया जाता है? इसलिए कि व्यक्ति जो है नशे की गिरफ्त में आकर के और जो चाहे सो बोतल दे दो और काम करा लो। तो अब बताइए, ऐसा देश और ऐसा समाज कैसे प्रोग्रेस करेगा, कैसे उन्नति करेगा? और जब बच्चा जिसको विद्यालय में आया है पढ़ने के लिए और पढ़ लिख करके एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए आया है, वही जब नशे की गिरफ्त में आ जाएगा, वही जब नशे का इस्तेमाल करने लगेगा, जब उसी का रास्ता जो है भ्रष्ट हो जाएगा, तो कैसे वो जिम्मेदार नागरिक बन पाएगा? इसलिए जरूरत है हम सभी लोगों को कि विद्यालय में बच्चों के लिए कार्यक्रम चलाए जाए। किस तरह के कार्यक्रम चलाए जाए? भाई जैसे आप जो जो किताबें आप पढ़ा रहे हैं उसमें जब इस तरह के स्थल आए तो वहां पर बच्चों को इसके बारे में चेतना जागृत किया जाए। बच्चों में वाद विवाद प्रतियोगिता, पोस्टर की प्रतियोगिता, इस विषय को लेकर के बनवाया जाए, और बच्चों को पोस्टर बनाने के लिए कहा जाए, बच्चों को नारा लिखने के लिए कहा जाए, बच्चों को जो है वाद विवाद प्रतियोगिता और निबंध और कहानी लेखन, ये सब चीजें जो है अगर बच्चे करेंगे तो धीरे धीरे उनके अंदर जो है ये समझ आएगी और प्रेरणा आएगी, उसके अंदर गहरे बैठेगी कि भाई हमें नशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और नशे का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है। कई घरों में कई जगह देखा है कि बच्चे बड़ों को भी समझाते हैं, बताते हैं, कहते हैं, जिनके अध्यापक
बच्चों को जागरूक करते हैं, वो जागरूक बच्चे अपने घरों में जा करके बच्चों से बच्चे जो है माँ बाप से प्रार्थना करते हैं, अपने पिता से प्रार्थना करते हैं, शराब मत पियो। ये हमने देखा है। तो क्योंकि हम लोग जो है 1996 में दिल्ली सर्व शिक्षा अभियान चल रहा था, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा का, तो झुग्गी बस्तियों में हम लोग जाते थे। तो बच्चे जो उसमें अनौपचारिक शिक्षा केंद्र जो थे वो और प्रौढ़ शिक्षा केंद्र दोनों एक साथ चलते थे। तो ये देखा कई परिवारों में कि जो बच्चे आए थे, वो बच्चे जो है जो उससे पाठ पढ़ाया गया जो किताबों में था, वो लेकर के अपने बच्चों तक मैसेज जाते थे। और बच्चे अपने माँ बाप से कहते थे कि आपकी आदत अच्छी नहीं है, ये बुरी आदत है, इसको बंद कर दीजिए, शराब मत पीजिए, ये हानिकारक है, हमको क्लास में बताया गया, समझाया गया है, हमारे सर मैडम ने कहा है। तो कहने का अर्थ है कि बच्चे भी मैसेज पास करते हैं, बच्चे भी बड़ों के लिए भी सुधारक बन जाते हैं। लेकिन कब? जब बच्चों को आप इस योग्य बनाएंगे तब। तो इस विषय को बच्चों के साथ कैसे लेकर के जाएं, इस पर जो है अलग से सेशन करने की जरूरत है, क्योंकि ये बड़ा विषय है ना, कि क्या क्या तैयारी करनी होगी, कैसे कैसे तैयारी करनी होगी, कैसे नशा विरोधी कार्यक्रम चलाया जाए, कैसे रैलियां आयोजित की जाए, कैसे कम्युनिटी विजिट कराई जाए, ये सब जो है अलग विषय है। और उसके लिए क्या क्या तैयारी कराने की जरूरत है, तो कभी जब सकेगा या अगर आपको पूछना होगा तो पूछेंगे, तो हम आपको बताएंगे। एक चीज रह गया कि इसमें मीडिया की क्या भूमिका है, मीडिया क्या कर सकता है। तो देखिए, मीडिया का काम यह है कि जो समुदाय में, समाज में, विद्यालय में जो अच्छा काम हो रहा है उसको हाईलाइट करना चाहिए। अगर विद्यालय में अगर बच्चों की जिंदगी बनाई जा रही है, नशा विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, बच्चों को समझाया जा रहा है, बच्चों को जो है नशे की दुनिया से बाहर निकाला जा रहा है ना, तो मीडिया का काम है कि मीडिया इन खबरों को अखबारों में प्रकाशित करे। मतलब यह कि मीडिया बहुत कुछ कर सकती है। और आजकल देख रहे हैं दैनिक जागरण वाले कई अखबार वाले लोग हैं, इस तरह का कार्यक्रम समाज में चलाते हैं और कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं बच्चों को। तो बच्चों की प्रेरणा देने में समाज में जो है मीडिया का, प्रिंट मीडिया का भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। इस पर देखिए पैनल डिस्कशन भी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो बहुत सारे काम जो है मीडिया कर सकता है। मीडिया बहुत ताकतवर है और मीडिया चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो मीडिया का काम है कि इस तरह की चीजों को हाईलाइट करे। तो मैंने आपके साथ सब्सटेंस अब्यूज पर हमने बातचीत की, हमने बताया कि नशा क्या होता है और किस तरह से बच्चे हमारे नशे के शिकार हो जाते हैं, क्या कारण है और कैसे जो है उनको नशे की दुनिया से बाहर ले जाया जा सकता है। उसमें सरकार की, समुदाय की और हमारे अध्यापकों की, चिकित्सकों की क्या भूमिका है, इस पर भी हमने एक संक्षिप्त डिस्कशन। मुझे लगता है कि आप ये जो चर्चा हुई है आपके लिए लाभदायक होगी और आप लोगों में से कुछ लोग जो 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 इसको क्लासरूम तक ले जाना चाहेंगे तो वो जरूर ले जाएंगे। और पिछले सेशन में हमने बातचीत की थी दूसरे ग्रुप में, तो उसमें बताया था एक टीचर ने कि उन्होंने अपने विद्यालय में उन्होंने जो है वो कार्नर, अवेयरनेस कार्नर बनाया हुआ है, अवेयरनेस कार्नर बनाया हुआ है और तरह तरह की चीजें जो है वो लगाती रहती हैं और हटाती रहती हैं, लगाती रहती हैं और हटाती रहती हैं, ताकि इस तरह की चीजें जब लगाई जाती हैं दीवारों पर तो बच्चे उससे संबंधित प्रश्न करते हैं, तो उस समय बच्चों को जागरूक करना बड़ा आसान होता है। तो ये सब गतिविधियां आप भी आयोजित कर सकते हैं। तो समय हो गया है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और अगर कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। जी हाँ, चंचल मैम, समय हो जी गया है। धन्यवाद सर। हाँ जी सर, जी समय हो गया है, धन्यवाद सर। और जैसे कि मैं जी चैट बॉक्स में देख पा रही हूँ, लोगों को आपका सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव लगा। थैंक यू सर। एंड नाउ इट्स अ टाइम फॉर ब्रेक, सो सी यू एट 4 sharp at 4 we'll start our session on pedagogy to develop writing skills. So it's a break time, half an hour break, and we'll see you after half an hour. Thank you. जी जी, धन्यवाद।
Welcome back. Good afternoon, sir. Good afternoon, Ajay sir. Ashok sir, sorry. Ashok sir. Hello. 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 Yes, sir. Yes, sir. You are audible, Yes, sir. yes, Okay. ma'am. Yes. Good afternoon, everybody, and welcome back. Now we have with us Dr. Ashok sir. Sorry, Ashok sir, Ashok. and he will be dealing on poetry. There is some changes, and he will be dealing on poetry, the objective and pedagogy of poetry. And I think the few of the participants are still not here. But sir, we can join it. At least we can start the session, and they can join later on. Okay, So, ma'am. sir, can we start the session? Yes. Okay, fine, sir. Okay, you start the session, sir, and other participants will join later on. Thank you, ma'am. Thank you so much for inviting me in the session. And thanks to Diet Rajinagar and thanks a lot for SCRT and participants. So they will be bear me today. Yeah. Chanchal ma'am, can we say start now or we need to be wait 1 or 2 minutes? Hello. Sir, we can start. Actually, we have to finish on time, so we can start right now. It's already 4. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Let me see here. Hello, Chanchal ma'am, is the screen is visible? Hello, Yes, sir, your screen is participant. visible. Yes, sir, your screen is Okay. visible. Yes. Hello. Am I audible? Yes, sir, you are audible. And screen? What about screen? Is it visible? Yes, sir, it is visible. Okay. Thank you. Very good afternoon to all the participants and very warm welcome to the session of the teaching poetry. As we all know that literature has a different kinds of form like prose, poetry, drama, short stories, journals, magazines and newspapers also. Some memorize also, some autobiographical and biographical also. So today we will be discussing about the teaching of poetry. So now let's get starting. Yes, participants, are you ready? Uh, Hello, participants? Yes. Yes, sir. Okay. Participants, before going to sharing my Yes. there is some disturbance in lining. Am I audible? Hello? Is this? Yes. Participants, what do you mean by poetry? Or you can say, what is poetry? You can write in chat box or you can unmute yourself. You can share your ideas. Okay. This chat box ready. Participants, you can write in the chat box or you can unmute yourself. What is poetry? What do you mean by poetry? How many participants are there? Yes.
Very good. Sunaina Saini writes, spontaneous overflow of emotions. Very true. That's really great. Amazing. Yes. Yes, one more. Subeda Rajbhar illustrates spontaneous overflow emotions. Very true. That's right. All right. Sundar, musical thought. Yes. And artistic writing. Yes, very good. Sonia Verma, emotional response. Yeah, very true. In rhythmic manner. Yes. Sunena, again, right. Rhythmic manner. Yes. Yes. Sundar Rajvar, can you unmute yourself? Can you illustrate what do you write in musical thought? Yani, how can you incorporate the teaching of poetry in the musical thought? Can you some illustrate like that? Yes, sir. I am Subedar Rajpur Yes, sir. from Yes, yes. Shakti School. Yes. Sir, I mean, musical, in the sense, musical thought poetry is because whenever we recite poem, whenever we read poem, our heart and soul always uh, get something musical, emotional attachment, which give relief to our mind and soul both. Wonderful. That's Rajvar, that's really wonderful. Sunaina Seni writes, it is a rhythmic manner. Yes, absolutely, you're right. Suchita Chandra writes, the expression of feelings and ideas in rhythmic way. Yes, very good. Uh, that's very wonderful, points you have highlighted here. Yeah, very good. So let us see what is poetry is. Poeter, it is the noun. It is a literary work in which especially intensity is given to the expression of feelings. Absolutely, you all have beautifully mentioned in the chat box. It is an expression of feelings and ideas and thoughts and provokes by the use of distinctive style. As someone already said, it is the response of the musical thought, or someone says it is the rhythmic. Sunena already mentioned here, it is the rhythmic manner. Yeah, someone else also can elaborate that it is the melodious, and it is the melodious. So that's why feel, and it is the elegant expression of our feelings, our ideas, or you can say what is happening in the surroundings. You can say an event also. And rhythm poems collectively or as a genre of literature. In a poem, the words should be as pleasing, absolutely right, to the ear as the meaning is to the mind. Suchitra also mentioned again the expression of feelings and ideas in the rhythmic way. Very true. It means poetry is an elegant expression of feelings and a description of any event. It may be event also and any occasion also. Uh, it is beautifully occurred in the 10th standard, ninth standard, content what we deal in the, we will see in later right now. The use of figures of speech or trimmed or word are used while writing a poetry in a phonetic melodious is taken care in brief steady. It means any poetry is the language of heart. Hello participants, am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. It means total overcome in the chat box of what I have mentioned in the slides here. Yani poetry is the language of heart, which requires musical instrument. Already mentioned musical Rajbhar mentioned musical instrument to pronounce better way, particularly the classical songs, plas and meters also. And we all know then that there are a lot of form of
poetry. It is the meter, it is the syllable, it is the intonation, it is the half rhyme, it is the full rhyme, or it is the iambic meter. A lot of form the poetry is available. So that's why the very important point is that poetry always requires melodious settings of words in lyrics used in each line, mostly couplets using the rhyme words, and grammatical order is not followed. Always remember that in the poetry, grammatical order is not followed in the poetry. It is always communicated by sensory or any other, you can say like expression way. We don't go to the grammatical structure not required in the poetic poetry. These are the some values, or you can say some role of the poetry, what we did in our classes. So now I would like to ask to anybody, can anyone pick up a value or role of the poetry is, and what do you understand and how can you analyze? How can you interpret in your words? Yes. So I am choosing names here. You have already mentioned here. Yes, Sunena. Sunena, yes. Can you read this one? Yes. Where I have cursor there. Yes, sir, but screen is not visible here. Okay, just a minute, just a minute. Okay, it is minus, control and minus. Wait. Now, is it? Hello? Is it visible now? Sir, I think there is Hello? technical glitch from there is technical problem from my side. Okay. Okay. I'm not able to see Anyone the screen. else? Okay. Other participants, can you, is it visible? Hello? No, it's not visible. Not visible. Not Okay. visible, sir. Okay. If so, if is it visible, can anyone read the what are the points I have highlighted in reference of the poetry? No visible. Okay, I have mentioned here some highlighted point. What the value of the poetry is integrating the literary form while during the in the trajectory in our classroom. Yani one is appreciating sounds, words, and patterns. Yes, I have just said that there is no grammatical form in the teaching poetry. So we need to be just appreciate what the author occurred in their thoughts in the written form. Spoken expression, yes. Poetry is, as someone already said, it is the spontaneous feelings. And spontaneous feeling to directly come to the in the real context, real world someone. So it is also used, and it is very important role of the spoken expression in the teaching of poetry. It means while during the trajectory in the plan of the poetry. Yes. Number third, I have mentioned here. Okay, not visual. Oh, I'm so sorry, Khalida. Fun. Yes, poetry is also deals for our fun and joys also. Integration, yeah, integration of all the uh, factors what the author writes in his point of view. Actually, we are not able to see the PPT. Sunena, I'm really sorry. I don't know what is happening right now. I am using laptop here. I will share this PPT. I have already mentioned Chanchal ma'am a few time ago. She will share with you. Integration is the integration of the point of view of the author and the reader, of the child and the someone else. What the author occurred in the poetry, and how we can understand and appreciate this literary figure. Creativity, yes. Poetry also enhances the creativity. It is used. You are now co-host of this meeting. Okay.
Hello. Now, is it visible? अभी भी अभी So visible PPT is नहीं? visible. PPT visible is? So I can see your PPTs. I don't know other person why can't they can't. Okay, it's invisible. Okay. Uh, don't know what is the animation figures. I will share. Chanchal ma'am will share in your group also. The poetry is the value. One is the creating writing because it is the creative work. So it is also enhance the particular to everyone that it is the role of the poetry is the creative writing. Vocabulary means it does not directly mean of the particular word. It in the poetry it is also it always sensitizing the word also. Variety, yes, different types variety, uh, prose drama, prose poetry, melody, ode, satire, lyrics. There are a lot of variety. Poetry is everywhere. We also find in our books also. Expressing feelings and opinions, yes. Language skills, yeah. Can anyone elaborate? Is the poetry can enhance the language skills? What are the language skills? Participants? Sir, language skills are kind of four in number: listening, speaking, reading, and writing. Yes, language skills, listening, speaking, reading, and writing. So, can we think the role of poetry is also can also enhance the language skills also? What do you think? Poetry. Someone already said it is the spontaneous feelings. It is the melodious expression. Someone also already said it is the now, pleasure, poetry is my pleasure. If these are points are very important with the dealing with the poetry, so definitely it also enhance and it also integrated to elaborate the language skills of a particular student or particular learners also. Confidence. Do you feel confidence? Confidence? Yes. I think we all always remember or we all are bathroom singers also we always and he sings a little bit song whether we know or yeah, don't know but we always enhances of the some lyricals in our mouth whether it is closed or it is open also. Imagination. The very important figure is imagination is required to everyone for enhancing the skills of writing poetry or teaching poetry or you can say any literary work everyone occurs in the different genre of form poetry prose drama and etc also. I think this is not is this visible? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Now it's yes, visible. sir, visible. Okay, I think there's someone. Okay, someone also mentioned there. The one most function of poetry is the rhyme. You know rhyme. So can anyone elaborate the what is the rhyme? Participant, it will be in a two-way session. I would like to just interact with you. What about rhyme? Yes. Of the poem, the rhythm. Okay. Very. That's really great. What is your name? Sir, it's Shilpi Bashishta. Silpi Vashra, really, you are really this great, great. Rhythmic yani rhyme. Yes, yes. Anyone else? You can share here or you can write in chat box also. Rhyme. So what about rhyme? Rhyme
mentioned here, I have mentioned here in the rhyme and rhythmic way. The usual design is fine, an ending rhyme of every line. Half rhymes are quite acceptable. Consider using these as well. But sometimes it is so sublime within a line to bind the rhyme and flying blind your rhyme will climb. Can we pick up, in the defining what I mentioned here, actually it is the prose poetry, prozic poetry style, but can we find one or two words which are rhyming here? Hello. Is there any rhyme word here? A fine Sir, line. fine line. Sublime Yes. rhyme. Fine line. And any more? Sublime rhyme. Uh, Fine line. And can we uh, on the phonic style, can we consider sublime rhyme? No. No. Let us see what is rhyme. Okay. So sublime and climb we can consider. We can on the phonetic transcription. Yes. So now I have a video for you, and it will clear you what is the rhyme. Recitation. No, this is the rhyme. 1 minute. I have 1 minute. I think. Is it visible now? Hello. Uh, Deepa ma'am, is it visible? Maybe. Yes, sir, it's visible. Sir, yes. Okay. Rhyme. Let us see.
Uh, in this video, half rhyme and what are the within lines and what are the words can be considered in the phonetic or sound basis to mentioned here. So, and I will also share this video in your group too. So this rhyming, this I have mentioned here. Use design is fine and ending rhyme for every line. Yes, always remember, but now it is not used in right now in the present scenario. So free word, blank verse, prose, poetry, most of writers, most of authors are using right now. Half rhymes are quite acceptable. Consider using these. Some rhymes are half rhyme means a dip. Some collocations of words can be used in the within line also. Half rhymes are quite acceptable. Consider using these as well, but sometimes it is too sublime within a line to bind the rhyme and flying blind your rhyme with climb. So this is the rhyme pattern you have already gone through the video also. So now teaching of poetry journal. So just we are going to discuss about the what is according to you. Is teaching of poetry is an art or is it something else? What do you mean? What do you understand? Participants, just share one or two points to me. As you are dealing teaching poetry in your classes, so what do you mean? Is this art or is this a skill? You can write chat box also. You can unmute yourself. Yes, yes. No. So let's move on to next. Yes, I have just illustrated here according to me. It's my personal opinion. You may be differ or not. I don't know. But you can share here. Teaching itself is an art, and teaching of poetry can be summed up in the following three letters. Uh, Three letters means PPD. This is the the dealing way. You can say this is the trajectory way, or you can say this is the classroom process you deals in. Can anyone guess in the three terms the format I have mentioned here, PPD format? Can anyone guess what is PPD? Yes, you can Presentation for the first week. presentation first P. Yes, yes. Next. Just it is guessing. It may be right or wrong. Doesn't nothing is right. D stands for demonstration. Okay, good. P presentation, D for demonstration. Sorry. Could be dictation. D could Okay, be D. dictation also. Absolutely, it may be. Why not? Can be dictation, maybe discussion, maybe. Let us see what is PPT.
एनिमेशन दे दिया हाँ PPT first P means here mentioned here preparation when you are going to beginning your poetry lesson preparation means some warming up yani some leading activities is how are you going to introduce the activity right now so this is first P is preparation. Someone also already mentioned bilkul correct answer performing. Yes, perform later on presentation means performing. Yeah, yes, Subidar. Actual teaching. Presentation means actual teaching in the classroom as recitation with proper intonation, a rising tone, falling tone, etc. Yani this is the main feature yani it is the mid activity also brainstorming ideas to overcome the poetry starting you have already mentioned now you are directly dealing with the poetry part so this part is very important you are presenting while using some of activities also yes third one is D. Already mentioned here, dictation. Yeah, dictation is the one of the activity. Yes, we always come out the reflections, we come out the shortcomings, and what the learner, our learner have learned or not. So you can also dictation also, you can also discussion also, you can also briefing also there. So discussion means after and post reading activities. This is the PPT format mentioned here. If I ask you, what is our traditional approach? Do you all, deal with the teaching poetry like the PPT format, or you deal in an another approach? Yani, is there any traditional approach? Can anyone some elaborate something else? Are you dealing with this PPT format or any other form or any other traditional approach also? Yes, participants, you can unmute yourself. Excuse me, Can sir, you, I would like to answer. hello? Anji, sir, I would like to answer. Yes. So sometimes I try dramatization also while I teach poetry. Poetry, very good. Because like Uh, in poems like Amanda in class 10, when a hmm. mother is nagging her girl for not listening to her, I try to do a role play in my class and children enjoy it. They all engage and they all enjoy while they see this role play. And Yes, very similarly, beautiful, in very. Custard the Dragon, there is a poem, so many characters are there. So first of all, I tell them what is the poem all about. They read it in groups, then on their own, they make groups and they divide roles. And then on the presentation day, they just present their this thing role, and it's a very effective medium. Children enjoy. Thank you. That's really great. What's your name? So my name is Suruchi. I'm from Dwarka Sector 6 school. Charuchi, really, it is very wonderful. Yani, we have Thank you, sir. just summarizing, paraphrasing using the, dramatic poetry. Now I can consider it is a dramatic poetry. Yani, I'm going to give a new term here, dramatic poetry. You mentioned. I will let here. Yeah, very, very true. Actually, I never been gone like this. Yes. I also use some traditional and PPD also. As you have mentioned, the Tale of Custard, the Dragon, I have NCRT book right now in my hand. All the pros have written in the AABB schemes. Do you remember? Yes? Like that, Belinda was as brave as a barrel full of beers, and Link and playing chased Lawrence down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice, safe case. And all the
poem is written in the rhyming scheme AABB. Or beautiful is that there are a lot of figures, speech and poetic devices in it. You know, once and I have already mentioned five or six. These are which are the main, figurative poetic devices, figurative language. Also, I mentioned here. It is very wonderful poetry, and I would like to suggest all the participants please go थ्रू दिस पोइट्री एज द अभी जो क्या नाम था इनका मैं भूल गया मैडम का तो इन्होंने जैसे सुरुचि। तरह बोला हाँ सुरुचि इट इज रियली मतलब अप्रोच इट इज अ न्यू अप्रोच अपार्ट फ्रॉम द पीपीडी एंड द ट्रेडिशनल अप्रोच वेरी गुड वेरी गुड And sir, thank you so much. We as teachers also enjoy a lot when we see children being happy and involving themselves in language games like such. We also get a chance of एब्सोल्युटली relief and happiness. एब्सोल्युटली Otherwise, becomes सुरुचि very dull and boring. One-way communication. Really, Suruchi. Ultimately, teachers, and we are the source of the learners also. Whatever as you have designed the in the another form, as someone also another form, we are using the different kind of activity. Not only we participants, and but they the new Gen X also, appreciate us also, and we also get satisfaction also. PPD. Actually, there is no best method, how to deal this paragraph, how to deal this poetry, no better method. You have to design according to the learner what they require at the moment. Okay, so as you have mentioned, this was the your great efforts. You have designed the dramatic poetry also. It works, absolutely it works. PPD, but it may cover many aspects of teaching of poetry at different level. Let us see what are these. Preparation, yes. So I have some points here. Preparation means when you are पहले मैं टाइम देख लेता हूँ टाइमिंग से पहले मैडम ने बोला था yes I have 1 hour here. Preparation when you are designing you are going to performing you are going to beginning this poem you are designing why I teach, why do I teach the poetry? Yani कि what kind of aims I need to be designed or defined there. Objectives means particularly it may be figurative language, it may be you can also concern with the learners with the rhyming scheme or you can show the other aspects of the someone also said meaning also someone also already mentioned here paraphrasing and other extra when you are going to preparing the poetry and you also need to be some material also aids also it may be material aids also I forget the material aids previous you need to be connect the children with the relating यानी with the आजकल integrated का बहुत चल रहा है देखा है ना आपने schools में integrated yes we have also integrate the knowledge, their concern, their awareness with the knowledge. How can we put their basics with the authors? And how can we integrate it? Introduction, yes, introduction also part of the poetry you are going to deal. This is the poetry regarding about two. The squirrel is about two. Lead in there are some lead in activities also you can also ask in our books already mentioned there are question before you read you can also start by asking some question you can also discussing look at see what do you see in this picture also and you can also share with your peer group or you can share in 4 5 students if you have formed any group you can ask there you can also show any picture flashcard real object, any really idea or any kind of aids also. Giving a brief background also by reciting a parallel poem. Yes, students loves a lot by the reciting parallel poems. By playing some relevant music also. Music is most utterance in the poetry also by giving a statement of time you can also give a statement to come to the you can say topic sentences
yeah, what about the poetry says? What the about the poetry occurs in the authors of point of view. So we can also preparing all these highlighted points here. But most important point is regarding reciting, and reciting a parallel poem. So now I would like to share a video at the point of view of the teacher, yani author also, recitation. Recitation by teacher. Where is Kai? Earlier. Yes. This is. No, this is. Uh, is the screen visible now? Hello. Participant, is it visible? Yes, sir, it's visible. Okay. Okay. We can see in this video how much the girl is pleasure and how much she is enjoying the recitation. So recitation is very important element for the poetry also. By the side of the teacher, also by the side of the learners and student also. The one more important point is that when you are preparing, you are designing to introduce a poetry, or whether it is prose also or drama also, you have also to give any some background knowledge regarding the author also. The author, in the point of view, why the author think, and why the author has written this literary item for readers, for the learners, for the general audience too also. So we also need to be a some little bit, brief introduction of the learners also. So how can we share the brief introduction of the poet also? So let us see. WB. Hmm. Yes.
These are some points like background knowledge of the you know your poet. You can mention and know your poet. You can also recite also recitation by the teacher side also recitation of the any learner side also, and you can also having some of kind of you can also elicit it some points. So showing any realia object teaching material you have mentioned there. So these are the some points preparing part PPT, the first part of the preparation of a poetry. Now let us see and look what the presentation part. Yes, presentation. Presentation means now it is the mid part of a poetry. Begin, mid, and post reflection. As you already discussed there, discussion and debriefing, yeah, dictation and discussing. Presentation means meaning of difficult words, pre-teach vocabulary. You have to mention there in the model reading, recitation by teacher. Absolutely, during you have to recite also teacher. Students working in small groups for various activities. You can also frame some groups and subgroup also, and give the task to the learners, and they have to discuss there, and they have to present in group, first group, and after the subgroup also, and after the whole class. Imitation by the pupils in the loud reading. There is a very unique question someone asked me. Students should be allowed to loud reading or not reading. The participants, what do you think? Teacher has already recite the poem loudly to the whole class. Okay. Now students also imitate also say after the teacher loud reading same like that or not. Sir, they should. Do you agree? Yes, sir, we agree. Yes, and it requires. In my previous batch, no, a teacher all mentioned here, sir, there is no required. Silent reading is the most required. But I suggested him, कि you are the ultimate guru ultimate resource. If you think it is best, it works, that you give the permission. If you think no, it not required, the particular learners already have completed the task whatever they want to sort coming from the learners. If they are able to express themselves without loud reading, so you are judge, you are the ultimate judge. Yes, so here I just remember, if you think, yes, imitation by the pupils, by the students, yes, but we always learn from the imitation, yes, we can remember, yeah. Comprehension questions after dealing with the four line, as Suruchi said, she narrated in the dramatic poetry also. So after having two or three stanza, we can comprehend, we can some elicitate some questions of how much and what they understand. Appreciation questions. Yeah, this is most required. As I have already mentioned earlier in the beginning of the today's session, yani कि poetry works for how to understand and how to appreciate. And we have also tried to integrate the appreciation questions in addition to the author's point of view. Final model reading together, yes, choral recitation. Recitation we can share. There are multi labeling, yeah, multi grade our learners also. So some students have different kind of ability. So if we can give the choral recitation, read one line to second one to and point one by one. So they also it also enhance the ability. They can also understand, also they can comprehend in during using this choral recitation. Last one is discussion. Someone already discussion. This is the last format, last point of this format of PPT. DT discussion means it is open.
Yani, going through the part of the preparation and compilation of the part of the presentation. Now, what else? What kind of activities right now? If someone is left behind to overcome the aims you have decided in the starting, yeah, what were the objectives? Any objective fulfilled or not? Yeah, recitation, the kind of recitation, choral recitation, individual recitation, a student's recitation, or by your recitation. If learners are not reciting well with the using its phonetic transcription of the poem with the rhyming, rhythmic, and using the figurative terms also there. So now discussion part I have mentioned it is open. You can ask to some any reflection questions. You can some ask some comprehension question. Someone already mentioned here, you can also, if you want to develop their vocabulary, so you can also dictation, and after that, Suruchi already here. So you can also give them some task. You have to summarize, you have to write us in summarizing, you have to paraphrasing, or you have also present in a like a role model also. So this is the discussion part. It is the open. No one activities is full and final. You have to design the sequence wherever you require. Yes, participants, understand? Yes. Yes, क्या sir. मैं फास्ट तो नहीं जा रहा कहीं मैं? Yes. Objectives of poetry. Yes. What are the objectives of poetry? As we all know, poetry के objects, any poetry is taught for sheer pleasure and enjoyment. We have already discussed here. If further lays the foundation for an adequate appraisal. Remember always this line also. The poetry always lays the foundation of an adequate appreciation. Any appreciation, mother, you have to understand and comprehend. Okay, integrated with the link with the author and as an audience in poetry. Therefore, the aims of teaching poetry should be different for different levels. The general aims of teaching English poetry at primary level are as follows. Here, our group mentioned here primary level here. It is not a primary level. We are dealing our 10th and 12th standard students always seems to be these are the primary level. You know, agreed? In the English language, I personally feel our 10th, 12th standard seems to be a primary level learners. Yes or not? No? If no, so you are a great teacher. You have done beautifully, and your learners are very smart. Like me, I felt like this. So I need to be some redesigning in my PPT form. And I need to be redesigned preparation, my presentation and discussion part. Whether it works, the objectives of the poetry, the learners will be able to recite the poem with proper rhythm and intonation. These are some objectives. They will be able to enjoy with joy and fun during the recitation of the poem. They will be able to develop their power of imagination. They will be trained to love for poetry reading and writing. They will also have fun. They will play with rhymings here. This is the very important, it is very to all. They play with the rhymes, rhyming schemes, rhyming words, and adjust their vocal cords of English sound also. Now, I would like to ask you to some suggestions. What are the some suggestions? Yani when you are dealing with the poetry part with your learners, apart from these activities, what are the other objectives? You can say, what is the your purpose for particular poem with the during with your class?
Participants, is there any suggestion apart from this? Am I audible? Yes, sir. Hello. Okay. There are some suggestions also. Someone in suggested us in the previous batches also. While trajectory planned during your poetry, the student should silently read straight through the get a general sense of the poem. Always meaning, any particular meaning you can, because there is no the structure of the grammar also, or the very beautiful use the now the words have different meaning also. So you have to general sense of the poem, try to understand the poem's meanings, organization. What is the organization means the form. It is ballad, it is the lyric, it is the ode, or it is the melody, or it is the prosody. So as a teacher, we need to be always remember the organization, studying these elements. The elements are the title. What is the any head, any theme of the title? Who is the speaker? Always speaker means author or narrator. Meaning of the verse. Meaning, what is the meaning? Not particularly Hindi to English. No, no, no. We just have to elaborate on the black also. But there is the particular meaning of these words in the point of view of the author also. Category of words used. What is the categorization of the use? Categorization word of use means the learner knows or not knows. It is the activate or it is the in the passive mode. Figure used, what kind of figures of speech in these are used there. So now here I want to ask you figures of speech. Can someone tell me what is figures? What do you mean by figures of speech? This is the most important literary item of a poetry. Figures of speech. You can write in chat box or you can unmute yourself. Most featured highlighted point is used in the poetry is figures of speech, or in these days today we always say it is, these are the poetic devices, or you can say literary figure. Participants, So like alliteration, metaphor, okay, simile. elitish, simile, yes. What is simile? Are you Suruchi? Yes, sir. Yes, Suruchi, sir. okay. Suruchi, can you define 1 or 2 points simile? Simile. Hmm. Sir, actually, when a similarity is drawn between two things, they are not the same, but a similarity is there. For example, he fought like a lion in the war. So here Yeah. the soldier is not lion, but his quality is of that brave lion. So Very good, very. You thank are you. using the comparison into objects using the any terms, any words as like. Okay, he fought like a lion. Very. He fought a lion. Yeah, this is the metaphor. You have compared the particular he to but like a loin, it is simply. Deepa mentioned here ornamented language. Yes, very important. All right, Deepa. Yes. The figures of speech, as Suruchi mentioned here, simile, metaphor, alliteration, personification, hyperbole, automania, imagery, symbolism. There are lot traunchy. There are lot of figurative term, figurative languages here. But at the level of the ninth or tenth standard, we generally use 4 5 figures of speech: simile, metaphor, hyperbole, and
alliteration and personification. So without asking you, because you all know the figures of speech, but I would like to show you a video for Syam Singh, figures of speech, very good. Poetic device for glorifying to poetry. Absolutely right, sir. Syam sir, very good, very good. So now I am showing you a video of figures of speech. Where is it? Where? Number one. Yes. Uh, Remember, I'm not asking you and I'm not telling you. I have a 5-minute video. Yes, so please go through this video. Now, is the screen visible right now? Yes, sir, it's visible. Yes. हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूं और वो टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच, जिनको आप पोएटिक डिवाइसेस भी कहते हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं और भी कई नाम से इसे जानते हैं। तो इंग्लिश में जो 5 या 6 बेसिक फिगर्स ऑफ स्पीच है, आज उसकी बात करेंगे, फिर किसी दूसरे वीडियो में और फिर एडवांस लेवल की उसकी बात करेंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच को फिगर्स ऑफ स्पीच क्यों कहा जाता है? Participants, someone is open his any mic. Please unmute yourself. The voice is echoing right now.
you are not audible, kindly unmute yourself and then speak. Yes, yes. Dear participants, he is Khalik Ahmed. Now, am I audible? Hello. Yes, sir, you are. Yes, yes. Yes, sir, you are. Okay, he is Mr. Khalik Ahmed, and he's my vice principal also. Earlier, he was the PGT of English and in Directorate of English. Actually, he has a YouTube channel and Facebook also. He is very active. He already mentioned a lot of video there. You can follow him, Dr. Khalik Ahmed. You will get a lot of video there, and I will also share in your Telegram uh, channel, Telegram group, the link of him. So I found that this video, sir already mentioned, very easier, shorter, and simple by using the bilingual language also. Uh, I think you have already know everything, the literary items and literary figures also. I have written two very short sentences here. Just you have to elicitate, you have to mention there. Life is a dream, or life is like a dream. Which are the literary devices in these two sentences? Sir, life is like a dream. In this sentence, there is a good use of simile. And life is Okay. a dream. Life is a dream. In this sentence, you have employed metaphor. Yes, thank you, Praveen sir. Thank you so much. Here there are two comparison items of life dream, but directly there is a irony. Life is a dream. Is it possible or not possible? Here, this is the metaphor. But life is like a dream. This is the simply using the terms of as and like also. Yes. Now move to next. Figure of speech used. Poems setting and situation. Always remember the what is the setting of the poem and what is the situation, what is the scenario when the poet occurred on the paper, the poetry also, like it was the French Revolution, or it was the Victorian age, or it was the period of the romantic period also. Yeah, right now is the any you know COVID-19 type, uh, scenario in the world now. So we always remember that the poet setting and what is the situation also. Basic poems, basic form and development. Poems, subject and theme. These are also many important subject and theme. Yani theme is what is the central idea, what is the content or content, and subject means what is the heading, of the poet also. We also deal with these yani point also now. These are some poetry toolbox, words, rhythmic, punctuation, where is it required or not required, stanzas, it is 4-line stanzas or it is 5-line stanza, refrain. Any poetry directly, we recite the poem, sometimes we read the poem also, but can we refrain a poem in another form also, like song or poem which is repeated after each verse. Now write an explication of a poem. Explication poem means how can you reviewing, how can you analyzing, how can you understand the poem, particular poem you are going to do. So can anyone just point out some one or two pointer? How can you analyze the poem? Well, applications means here, I mean there, and you are going to operate. Operation हो रहा है पूरा poem का यहाँ पे, ठीक है ना? You have already figured out of the PPT form or in another from someone already held in the dramatic poetry also. Yes, someone also in transformed in the summarizing also. But here I want to hear suppose you have a poem particularly like Belinda, as she says, the tale of Custard the dragon.
So now you are going to the how can you explication and how can you analyzing these points. So there are some points. These are some expectations from the point of view, the teacher and the expectations from the learner. Yani ki you are going to deal with the particular poetry for a detailed explanation of the meaning of a poem or the act of making clear or removing obscurity from the meaning of a word or symbol or expression while writing an explication. Explication means you are reviewing or revising, summarizing, or you are going to transferring in another form also. You are going to operate full of operate like that. Yes, just a minute. Participants here now before. Okay, is there anything? Just a minute. ये कुछ फिगर आती नहीं है. Yes, 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 yes. Okay, इसमें आ नहीं रही. It is not visible. No? Application. Here, one more important points I have mentioned here. It is not visible because I am not seeing. Is the screen visible now? Hello. Yes, sir, but it's a blank. Okay, blank. In laptop also, but I don't know what is happening right now. But in my mobile, yani, are you seeing my mobile? Yes. Yeah, this is my mobile. Yes, sir, but So right. not clearly. Okay. Okay, so I will share this. These are some questions to be asked with our class learners. What does the title contribute to the reader's understanding? Suppose someone already mentioned here, this is the title, this is the squirrel. Okay, so we can also ask the students according to you, is the title right? What do you want? Suppose student wants to, this is the question. There is a question because the question were question mark always mentioned in history also. Who is speaking and what is the situation? The poetry and who is speaking. Like there are 3-4 characters in the is the situation in the poetry like find any similar word. One or 2 point for hello.
अशोक सर, आप ये हैं यहाँ पर? अशोक सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। अशोक सर, actually, sir, there is some internet problem. So, sir is joining within a minute or two. Hello, participants. Am I audible now? Yes, sir, you are. Okay. Don't know what happened and on my laptop right now. I am on, mobile phone. Yes. Uh, as I was mentioning there, the teaching of poetry, what is the poetry is, and what are the objectives, what is the literary figure, and what are the art tools like rhyming, like rhythm, like length, like of the figures of speech. So then I wanted to poetry. I want analysis there of poetry and how I can show you. Is there anything else here? Sharing. Is there any sharing here? Share content. Okay. Yeah. Mm.
कहाँ से जाएगा ये? Optimizing to see the instruction. Participants, can anyone suggest me if I want to share this poem from my WhatsApp group? Can I share like that? Hello? Google Drive. फोटोज में जाएं क्या? नहीं फोटोज में. ओके, फाइल मैनेजर में. यस. डॉक्यूमेंटेशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAMS scanner. Where is it? My video. Participants, I will share the video of a poem I wanted to discuss there. I have a poem. I wanted to operate the poem. Am I audible? Hello? Yes, sir, you are. Sir, you are audible. Okay. Actually, I wanted to draw your attention on the poem Gitanjali, which was written by the Gurudev Rabindranath Tagore, where the mind is without fear and the head is high, where knowledge is free. I wanted to just come on, why the Guruji has written the poetry, what was the setting, what was the situation. As we all know, the situation was, the timing was, for the freedom. We wanted to, we were all, fighting for our freedom right now. So this poem is actually beautifully explained by the Guru Rabindranath Tagore, where the mind is without fear and the head is held high. Yani it means this line also always awake us to countrymen. Yani we people have to think and express how can we ourselves express our thoughts, yani freely and fearlessly, and where the people can hold their head high in self-respect. In self-respect means in the respect of our nation. भी नहीं आ रहा अभी. अच्छा, okay, नहीं आ रहा. So the other line was also operated where the world has not been broken up into fragment by narrow demonstrations where words come out from the depth of truth. ये वाली जो लाइन है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि where the word come out from the depth of the mouth. Guru already mentioned there कि we, yani कि this line always very interesting to all the people of our country and Indian to thought the action कि man is free to think and act in the wider interest of humanity. Actually, if we explicitation of this poem, yani we find actually this is the poem is setting, it seems to be like a patriotic poem. यानी ये एक patriotic poem है in that particular setting of the timing. Guruji Rabindranath Tagore ji praised to God, yani that his countrymen, yani India especially, may awake in a world of free thought, noble action, and universal goodwill. There should come new awakening, so that the may lead the whole world. So I wanted participant. I'm really very sorry. Don't know what is happening. I have a, I am computer also and the screening is not visible. रिट्टे बार बार आ रहा है. So I am using the mobile and I'm not getting where is the Gitanjali is in my mobile right now. So I will share this Gitanjali in your group, okay? And I will share. I have a video also. As we discussed here, how can we refrain the poem? Yani this is the patriotic poem, and someone, singer transformed in a song. Yani it is a song.
like that. I can't imitate like that. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from depth of truth. So like that, I will share in your group also. राइट नाउ अब मैं एक दो मटेरियल है आपके साथ ग्रुप में करूंगा. पार्टिसिपेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी. नाउ आई वुड लाइक टू समराइज दिस राइट नाउ. हेलो, am I audible? Chanchal ma'am. Yes, sir, you are audible. Yes, ma'am. Just song which I wanted to play in, right now. I will share in your Telegram.